टेम्परेचर वहां पे, विच आई एम श्योर जाता है क्योंकि इट्स हाई अप, राइट? हाँ, सो एंड जनवरी में ज़्यादा ठंड होती है, ये बात मतलब पीपल फॉरगेट दिस। आई थिंक पीपल एसोसिएट दिसंबर विद विंटर, बट जनवरी इज द मेन विंटर, राइट? हिमांशु, सब नहीं भूलते कि जनवरी में मेन ठंड होती है भाई। मेरे से कोई पूछ के तो देखे। मेरे सामने कोई माइनस की बात नहीं करेगा प्लीज। कल रात को इट वाज एक्चुअली यस्टरडे वाज द फर्स्ट नाइट वेयर आई फेल्ट this is crazy. This is a crazy cold because it was -5 at like throughout the day practically. And it's also like my if it's like for example, even if it went up to like -1 or 0, it was वो weather app पे वो दिखता है ना that it feels like -5 or it feels like -7. तो yeah, या it's काफी काफी scenes. तेरे पास But हीटर है? yeah, मेरे पास हीटर है but we can't run it like the entire time. मतलब we can't run it for more than 3 hours in a row. व्हाई? बिकॉज इट्स दैट बिग वन ना, तो It's इट a सक्स big, आउट ऑल द थिंग। yeah. बट Also, it's इट नीड्स not टू like safe apparently. मैंने उसको साइंस से पूछा है, हम लोग की लैंडलेडी है, उसने हम लोग को बोला है नहीं ऐसा। नहीं, भाई कुछ सो मोनोऑक्साइड का होता है उसमें से। हाँ, वो भी होता है हाँ, but generally also the heater here I think self regulates क्योंकि sometimes this thing fucks with me because I feel like I should like I'm freezing और मैंने चालू किया हीटर and then but it's still not as hot as it should be and then sometimes it's like gets super hot so I think it kind of self regulatory. भाई बहुत इट्स अ अजीब है गैस यार। चेम्बर प्रैक्टिकली। Oh, I didn't crack that joke. Immigration services. Yeah. But we are live now, Bharat, asshole. Uh, so let's just start the episode. I think we have a lot to cover today. So we will या we will keep our rambling and our opinions and all bullshit. Oh, okay, it's working. Five people already here. But before we start, I want to set a goal. Last time we kept 10 super chats, we got greedy. I think let's keep five super chats ka goal. Okay. बट वी And हिट 5 सुपर चैट्स लास्ट टाइम, राइट? नो? we hit five. We hit five. तो अब तो 10 एम करते हैं भाई। नहीं कम नहीं ऑन। दस नहीं, दस करना है मेरे को लगता है अभी ऐसे मेरे को शर्म मतलब आती है पैसे हाँ, मुझे भी शर्म आ मांगने रही में। है भाई, हम लोग हाँ, थोड़ा पर ये यहीं पर हम पीछे रह जाते हैं सब लोग। मतलब बाकी लोग तो कुछ भी करते हैं भाई, पैसे के लिए पागल है। तुम दुनिया देखो जाके भाई। सो आई थिंक 10 या 5 बताओ क्या। But then 7। let's keep a goal like good thing. 5 सुपर चैट तो भरत नाचेगा। ठीक है, पांच सुपर चैट भरत नाचेगा। भरत तू तो नाचेगा ना? ठीक है चलो। भरत नाचेगा और देर इज अ वेरी फनी वीडियो ऑफ भरत डांसिंग एट माय एंगेजमेंट फ्रॉम मेनी वो तो इयर्स इट्स अगो. आउट देयर। But that's on like private Facebook and stuff, I think. So I feel like we can put that out in the आई थिंक WhatsApp group. दैट्स अ Yeah, बेटर आइडिया। प्लीज yeah. या। Bharat dance slash video reveal. Okay, great. We keep the timer for 2 hours, I guess. Okay, start goal. That's a great goal, I think. And welcome to 100 episode, इसी के साथ 127th episode of the Discontent podcast and keeping the goal that we have for this year alive, as I think Himanshu mentioned, that we have to cover at least one a week in this year as much as possible. So we are near the goal. It's 15th of January. We're already doing our second episode. So ideally before Jan ends, we'll do four. And today we have a lot of movies, a few movies, a couple of one, three movies, one show. But let's just get clear. All of us have watched All We Imagine with Light. हम्म। यस। Girls Will Be Girls is also watched by all of us. नहीं, मैंने नहीं Uh, देखा। तूने ओ नहीं देखा सुनो। क्या? Okay, ठीक है. Girls Will Be Girls is watched by two of us, and we will give spoilers as a way of punishing Himanshu for it. तीसरी चीज है बट Black शुड वी Warrant. गिव स्पॉयलर्स फॉर गर्ल्स नहीं विल बी नहीं नहीं, गर्ल्स बिकॉज I'm kidding. I'm अच्छा kidding. ओ ओके। So, third thing is Black Warrant, which is a new show on Netflix, and but Himanshu and I have watched it. आई Himanshu has I've watched read most of it, I've and you seen read the like book. 4 episodes, but मैंने book पढ़ा है। I've read the whole Nice. book हाँ, a year ago. I recommended it on sweet. the thing also podcast You because did. You did. I think whether he recommended on the group, and that's why I Hmm. देन read यू it, रेड इट। and then And I I remember, I think I had also recommended an interview of Sunil Gupta when he had, because when the book had just released, अभी न्यूज लॉन्ड्री पे एक इंटरव्यू आया था of him.
which was very interesting. And I remember being very fascinated by that, although I didn't pick up the book. But yeah, so that's also a very good interview if anyone wants to watch. He's And also Nosferatu. involved with the show, right? Sorry. He's Sunil also Gupta involved is with, the writer of the book. of he's the the book. He's writer the of the show. warden. He was the warden. जो No, no, no. warden के In the ऊपर है. movie, in the show, I mean. I mean, he would be credited with he's credited with उसकी I book adapt कर रहे हैं ना उसकी I life think rights he's लिए more than हुए. that. He's exec producer or something. No, that's Josie Joseph. Oh, is it? So Josie Joseph, I think, who's another very good author that we've recommended on the pod before, is he's a very good author. He, I think, has a company called Confluence Media. It's मेरे को Okay. बहुत ही smart लगा था ये चीज, that what he's done is that for investigative reporters to come हाँ. and turn their stories into fiction, or Very cool, like na? for the screen. It's a very kind of, I feel like it's a necessary idea. It kind of reminds me of, The Wire and David Simon, and Yeah. how they also did a similar thing. So I find that to be very promising, although my views on Black Warrant are a little, uh, I don't know, a little weird. Anyway, we'll get to that. Nosferatu is the fourth thing that Bharat and Himanshu have watched. I have not, so I would also like to know what you guys think of it. But I think Yeah. we should start with the heaviest hitter first, which is All We Imagine Is Light, just in terms of the amount of people have watched it, and I feel like we can discuss it the most with spoilers. Yeah. So, oh, I loved the movie. I'm sure. I don't know any of y'all who did not like the movie as much. I too really I, liked it, dude. I watched it twice. yeah, I Hmm. liked it, but I wanted to ask you guys, did you guys really like it? मतलब Yeah, what the fuck is this? या ये मेरे को ये Yeah. सेंटिमेंट और ये सवाल मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है, चलो। बड़ा हिमांशु, बता क्यों तूने ये सवाल पूछा हम लोग को। मेरे को पता है क्यों, बट तू बता। मतलब तुम बताओ ना क्यों अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी। आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम नहीं यू नहीं, बिकॉज तूने तूने बोला कि तुम लोग को सच में अच्छी लगी है, तो ये जो सच में जो है, जो कहाँ से आया है, ये बताओ। यार मैंने देखी, अच्छी लगी। आई हम्म। लाइक द टेक्निकलिटी मोर। I ओके, think it was फेयर। I really liked the camera work. Okay. हम्म। Now they use like diffusion filter and stuff. I can tell they've made it all हम्म। dreamy. I really like the sound design. It's like a dreamscape, the whole audio thing of it. But when I या। thought about the film, na, like I kept thinking about what am I watching. मुझे structure थोड़ा, I mean, it's dreamlike, right? It's supposed to be like magical. I get it. And there's a portion of it which is completely inside the head of the character. I got that. हम्म। हम्म। I got everything. स्पॉयलर्स, ठीक या। है? I got the bits, but I don't know. I don't want to say कि I loved it and it changed my life or anything. I हम्म। had, I just liked it. So you're saying you liked it as an average film, and you don't think that it's as much of a marquee film as people are making it out to be, is what you're saying? मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है ही नहीं, बहुत कम है। अगर तुम Okay. लापता लेडीज के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ऑल वी हाँ। इमेजिन लाइट बहुत अच्छी है, मतलब बहुत हाँ, ज़्यादा अच्छी है। तो Fair enough. I agree. सही सही बात है। बट या। बट जो एक अंडरलाइंग सेंटिमेंट जो थोड़ा मार्केट में भी आजकल फैला हुआ है, वो ये है कि विच इज सिमिलर टू व्हाट हिमांशु सेड, कि अ लॉट ऑफ पीपल से दैट ओ यू कांट ओपनली से दैट यू डिडंट लाइक अ फिल्म लाइक ऑल वी इमेजिन बिकॉज सारे इंडी के चौधरी यही बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छी ये पिक्चर। राजेश राजमनी ने बोला था ना? आई डोंट नो। हाँ ओ हाँ, द राजेश। या दैट या या राइटर, ओह या आई या हेटेड दैट हिट, Dude, I दैट वाज अ हिट hate पीस। his review of All We Imagine Is Light. And I just want to get into that before. I understand where Himanshu is coming from, to be honest. Although I don't agree with it completely. But Rajesh Rajamani ने एक article लिखा है, I think in the print, about how All We Imagine As Light is basically a very stupid kind of viewpoint of village life and Bahujan lives and all of that. And मुझे बहुत ही stupid लगा वो piece, in fact, because I thought, like, first of all, yes, there is a lot of I love a lot of writers who are coming in who are talking about the Dalit experience and the Bahujan experience in regards to cinema, and but that doesn't mean it becomes a monolith. किसी एक तरीके की सोच उस पर उस एक कम्युनिटी को डिक्टेट नहीं करती कि ये उनको सही तरीके से पोर्ट्रे, हाँ, एक बहुत ही गलत तरीका है पोर्ट्रे करने का, जो आई थिंक एवरीवन वुड अग्री विद, but I don't think All We Imagine Is Light falls into that. I think this is more like, kind of like almost like if you're reading a literature text and doing semantic nitpicking.
कि ये टर्म यहाँ पर क्यों यूज, मतलब आई फील लाइक इट वाज मोर ऑफ दैट कि हाँ It was तो also, I think he was, I agree with what you're saying completely. And also हम्म he says कि oh इसमें Ratnagiri को is being shown as some kind of place where it's like they find freedom and all that. My point is कि I do not see the film as that, of that statement, to be making that statement, हम्म because it's not that. It's a more, I feel it's where the characters, where the story takes the characters is what I found. या And I also felt a certain place can mean something for me and not the same to you. एग्जैक्टली So it doesn't really, अभी क्या इसका हर चीज के पीछे मुद्दा या एजेंडा नहीं होता ना, कि फिल्म मेकर एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा है कि मुंबई, मेरे को ऑल्सो बाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी था व्हेन आई वॉच द फिल्म ऑल्सो. I did not necessarily see it as a Bombay film or like the city film. I हम्म felt that it was more of a character-driven story rather than the city being it's a love letter to the city. I don't think it's a love or a hate letter to the city. I just felt that it's a reaction to the city, right? It's a हम्म reaction of the characters to the city. तो वो तो वेरिड हो सकता है यार. मेरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली किसी और के से अलग ही होगा. हम्म And Rajesh also mentions that a city has more of an openness with regards to caste. अगर वो लोग, spoiler alert, अगर वो लोग रत्नागिरी में cave में, if they were seen kuchi kuing, they would be probably, lynched treated, yeah lynched, treated even worse than, let's say, in a Mumbai, which I think is perhaps true. yeah so But मतलब what's your so what? point yeah तो पकड़े तो नहीं गए ना. हाँ That's that's what not the statement. मतलब क्या ये मुझे लगा. it's So ridiculous I और मैं उस पे sorry complete तो क्या कह no, रहा that's it. That's my point also. Ki it's not a, as you said, it's not a monolith, and it's not everything is a fucking statement. है yeah It's a story of three characters on their journey. Not it's not. Also, उसकी उनकी आइडेंटिटी पे भी ज्यादा बात हुई नहीं है फिल्म में. नहीं ज्यादा नहीं इट्स हुई नॉट दैट बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि ये इस कास्ट के हैं, ये उनकी वो है, बट इम्प्लाई इट्स किया है थोड़ा सा बट एंड करेक्ट. यू बिकॉज यू लिव इन मतलब इंडिया एंड यू हैव बीन टू या हॉस्पिटल्स एंड नर्सेज फॉर एग्जांपल नर्सेज डू कम अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम केरला तो अभी वो या ऑल्सो मेरे को एक चीज बहुत ही पेक्यूलर लगी वो आर्टिकल में एंड आई नो आई एम सॉरी इट्स बिकमिंग अबाउट दैट बट आई फील लाइक क्या होता है पहले कल्चर बनता है विच इज ऑल वी इमेजिन लाइट विंस ऑल दीज अवार्ड्स गेट्स ऑल द अक्लेम देन काउंटर कल्चर आता है कि everyone who wants to be snarky about it and be like oh but actually you guys are just cinephile and then उसके ऊपर अभी हम लोग वो वाले स्टेज पे हम लोग जो अभी कर रहे हैं जैसे काउंटरिंग द काउंटर कल्चर जस्ट जो कि इम्पोर्टेंट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरे को इसलिए वो सिली लगा वो पीस बिकॉज and that criticism. He said that these characters felt freer in a village area, which is obviously not a village. Villages in India, as Dr. Ambedkar had said, they're a den of, what do you, ignorance and this thing. So, which is all true. But a freedom can mean many different things to many different या individuals, even a freedom, not just a place. Like, for example, what if I am burdened by a lot of, let's say I'm a minority in Bombay or I'm a this, or I'm going through a lot of difficulties in Bombay. What if I am most bothered by the pollution in Bombay or the traffic in Bombay? And out of all the identities that I hold as a human being, in that moment, my identity as a commuter on Bombay roads supersedes all of them, and that's my number one problem. तो ये भी एक when you're doing fiction, that's what you're हाँ doing, na? You're not doing a human indices report. या You're telling a story, which is about a character which can feel multiple things. Anyway, that said, हिमांशु के point पे आते हैं, which is Bharat. Did you really like the film? I really enjoyed the film. I watched it at Yeah. Mami. I think the first screening of it in India, I think. Hmm. और मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड उस टाइम पे भी आई थॉट दैट द रिएक्शन वाज अ लिटिल म्यूटेड. व्हाट आई डिड फील वाज दैट इफ यू गो इनटू इट एक्सपेक्टिंग लाइक ओ अच्छा ये फिल्म को ये अवार्ड मिला है, सो इट्स नॉट अ शोई फिल्म दैट वे. इट्स नॉट अ फिल्म Hmm. विच काइंड ऑफ प्लेज टू अ फेस्टिवल लाइक फेवरेट्स, कि हाँ मुझे मालूम है कि इफ आई प्रेस दीज बटन्स देन द फेस्टिवल्स विल applaud me. It kind of does that towards the end where it becomes a hopeful story of three women and India and all of that. But I found the story to be very unassumingly good, कि Hmm. एक कहानी चल रही है, मैं किसी की लाइफ स्टोरी देख रहा हूँ and it can go in any direction, and that's what kind of stood out to me. I like the unpredictability of it. I liked how how it's not pushing any buttons.
and by doing so it pushes buttons is what I like. तो Hmm. मेरे को तो and I watched it again just to kind of see it without the hype, क्योंकि इन Yeah. मामी का audience if you know is like goes crazy sometimes, right? कि तालियां मार रहे हैं, चीखे चिल्ला रहे पागल। हैं भाई, एक मतलब तो सबसे अनोइंग चीज मेरे को ये, मेरा एक पेट पीव है मामी में, कि जैसे ही कैन का वो आता है शुरुआत में ओपनिंग क्रेडिट्स में, लोगों को माता चढ़ जाती है, ठीक है, कि मतलब लाइक आई डोंट no, अंडरस्टैंड that's the base level. व्हाट्स Woohoo! वो, या वो वाला इतना अनोइंग एंड मतलब ऑल्सो आई हेट वॉचिंग, दिस इज अ वेरी सैड थिंग फॉर मी, अनदर पेट पीव इफ आई मे शेयर, आई love and hate watching fun films at Mami, which are outright they're cracking the comedies or they're cracking jokes. क्योंकि when in a Mami kind of audience, लोग इतने त्रस्त होते हैं धीमी मूवीज देख देख कर, ठीक है, हाँ, कि वो लोग को जैसे ही थोड़ा कुछ फन टॉइंग सा मिल जाता है, दे गो क्रेज, दे लाफ एट एवरी जोक एंड दे स्टार्ट क्लैपिंग। हम लोग नी कैप देख रहे थे भरत, इफ यू रिमेम्बर, विच आई लव्ड yeah, दिस ईयर की मामी में, द पास्ट ईयर, and people, every throwaway line, every little wisecrack, all of them were funny, hmm, but some of them deserved a laugh, some of them deserved a chuckle, like what I just did, but everyone just goes crazy anyway. yeah. So this is one issue with watching festival films. I will throw this back to Himanshu Do abhi, you guys but think Hmm. do you guys think that this film works better if you watch it alone on a laptop without the audience? Because some films, if a film is about loneliness, Hmm. I think the main theme of this movie is this, right? It's about, companionship. So if you're watching it in a like, do you think problem है कि तुम लोग सब बैठ के देख रहे हो एक साथ और तालियां बजा रहे हो, ये प्रॉब इट्स क्रिएटिंग लाइक nahin, अ nahin. So because I watched it in the theater, but I watched it in a theater of maybe 5 or 6 people, out of which two of those people were with me. So, uh, so I watched it in a normal movie theater जब ये बाद में रिलीज हुई थी, और मतलब मुझे, I will also give my view on the film, which is that I loved the film. I think technically it is a masterpiece in my view. I think in terms of जो what हिमांशु जिस पे हंस रहा है अभी, वो मुझे लगा that why I thought that was amazing was because, and it's not just about, I know हिमांशु will say कि ये बहुत ही एक सिंपल सा लेंस कुछ तो लगा के वो लौड़ा लहसुन कर सकते हैं उसके साथ, but the reason why I love it कि ये लौड़ा लहसुन फिर किसी ने किया नहीं आज तक. What I feel is that Bombay deserved to be shot like this. I have personally, as someone who's not a cinematographer, I have never seen Bombay shot like this. In its days or nights and on the trains and in the stations, it's never, लोगों ने वो सेम लोकेशंस पे शूट किया है, पर बहुत अलग तरीके से शूट किया है, और मुझे लगा कि जिस तरीके से इस फिल्म में शूट किया है, इट ब्रिंग्स the madness of Bombay with all the fucked up parts of Bombay, and all those even the choice of putting all those interviews uh, of characters all over the city, and you Yeah, yeah. hear what their stories are, and they're just telling you their problems in the city, all just listening to that, and with those visuals, I thought it was very very well done. It kind of this is like, I feel like why a lot of people feel like कि ये वो वाली फेस्टिवल फिल्म नहीं है जिसको what is usually lauded in the past few 5 7 years, is because I feel the indie film ka definition has also changed. It's become, a lot of it has become about more path breaking stuff in terms of edits, or in terms of the music you use, or some kind of crazy, maybe some violence, or maybe those kind of things are more exciting in indie films, and we do, and I love those as well. But I think इसमें ये, this is more of an old school, almost like a Ken Loach या पुरानी जो Hmm. एक लिन रैमजे की रैट कैचर करके फिल्म है, which is also great. तो those old school indies which are very Yeah, yeah, muted, which are very Michael Haneke जैसे, they're very muted, they're not loud, they're not showing off camera, they're not showing off any some kind of convoluted story. It's very simple, everything is very simple, yet it stands out, and that's why I love the film, and I think that's why it is getting so much acclaim. तो ये, और यस मेरे को सच्ची बहुत अच्छी लगी, although I agree कि मेरे को एंड का पार्ट did not sit as well with me. Although I loved the spoiler alert, the scene where Kani Kusruti's character is talking to her husband in her head, yeah. basically. I loved that scene, but short of that, that whole portion felt a little bit. I felt like it became a little run of the mill at that point. Thoda, Hmm. you know, but that's a minor complaint because the rest of it I really liked. So yeah.
I think the both of us are in agreement. Himanshu has other Yeah. thoughts. Huh. No, Himanshu, I you tell don't us know. what is your reservation in this? Yeah. No, yeah, there is no reservation. I liked it only. I just wanted to get to the bottom of it because I feel like there were a couple of things that I was thinking about when I left the hall. Hmm. I was trying to understand why the film is called All We Imagine Is Light, and I was trying to understand because they've used particular words and phrases and dialogues to talk about light, and light has some significance. They've shot it like the camera work, na, there's always some sort of. No, I was trying to notice how they light it because I was thinking Hmm. because they've used lights, the city lights, as almost like a character of its own. So I was trying to understand it better, but I couldn't. Maybe I'm dumb, but like मुझे लग रहा था कि थीम क्या ये क्या है? डिफेंसिव मेरे को चीज मैं है। अपना हाँ ओपिनियन दूं इस पे, जो मुझे हाँ। लगता है, जो एटलीस्ट जो मैंने टेक अवे किया, was that I think every character, including that husband character, is kind of looking through a dark tunnel at the end of a dark tunnel where there is light, and he is doing that literally because he says that sometimes we used to be working so much in the dark that we forgot light, what light looks like, so we used to imagine light. That is the closest Hmm. I this got it. direct. So that is, I but I think that applies to each character. I think that applies to all the three main characters, how they're kind of in a situation, in a sticky situation where they are having to imagine light, and I think towards the end they find it, or they find a hint of Some it, version of it. Yeah. some version of it. I think and that what Bharat said juxtaposed with the city. ठीक है. Hmm. Bombay as a city, they show you the first half is completely about how miserable an existence this is. Whether you Hmm. are working, whether you are traveling, whether you have to deal with the rains or the harsh summers and all of those things. It is not a great existence. You're dealing with builders who want to take over your build wherever you're staying and all of those things. Um, at the and you know that the young doctor and she's going on a date with a boyfriend, they can find no space whatsoever anywhere in the city. So I think it, but then I think the film is asking you what is it that is keeping these many people also going, you know Yeah. like, why deal with all these things, because they are what Bharat said, like I feel like they're all imagining some sort of goal and light some at sort of the hope. Yeah, light light at at the the end of the end of the tunnel. tunnel. It is Yeah. that, I think in एक some और ways. हाँ. Aishwarya had a very interesting reaction. Aishwarya is my Hmm. wife. She, at the interval point, she was hating the movie. She Hmm. was disgusted by it because she's like, I already know that I'm already struggling living in Mumbai. Yeah, I yeah. don't want to see so much more struggle. Malad represent. Yeah. Yeah, Malad. तो उसका ये था, but then of course she liked the second half more than for that reason. Hmm. But yeah, वो थोड़ा सा वो है, मतलब it makes you feel worse about Before you feel living in better. this before you feel Hmm. better, before you can Yeah. imagine your life. I think the Yeah. climax keeps making you feel worse. I think the Hmm. point is to make you feel really bad. But the thing is, maybe if I'm not from Mumbai, na, Hmm. like I'm also imagining this like what it would feel like to live in Mumbai and then imagine the light. Well, there is a Hmm. bit of I have to like participate a lot to get the movie. And the thing is, I've lived in Mumbai, but a तो majority of the country उल्टा I've मैं not तो lived कह in. रहा हूँ, तेरे को तो यू कुड नॉट इमेजिन द लाइट, I could इसीलिए तो not चले गया imagine. ना वापस. तो Fair point. तेरे को That's why तो maybe I फर्स्ट didn't हैंड like the film. एक्सपीरियंस, हाँ एग्जैक्टली, Uh, no, तूने but see, लाइट imagine देखी नहीं. people who have not हाँ. lived in Mumbai, they might. What do you think will be their perspective about this भाई film? तो दुनिया भर से अवार्ड मिल रहे हैं तो फिर मतलब उनका भी. आई थिंक लाइक सिटीज आर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुंबई, इट्स अ सिटी. cities Hmm. are miserable, a lot of them. Okay, if you're मतलब big Yeah. cities are hard to live in. That's Yeah. but that's why people live, but people live there because it's high risk high reward also, you know. ऑल्सो हाँ, दैट्स व्हाट ये ना, राजेश जो है, उसने भी ये बोला कि cities are not so bad, ये वो, but my Hmm. point is that is also the point of the film. The three Yeah. characters meet because of Mumbai. They Yeah, are diverse in their thinking, their food they can only choices, their, work in a city like that, to be honest, yeah. as women, as single women, हाँ, you can never form that kind of a friendship in a Ratnagiri or staying there. You can probably. only form those kind of like diverse. I'm just talking about diversity of thought, Yeah. diversity of people. वो आपको एक शहर में ही मिल सकता है. So it's not showing Mumbai in a filthy light, like that. Yeah. नहीं, I So, didn't think of it as that. मुझे ऐसा नहीं लगा कि it's about Mumbai particularly or about how bad it is. hmm.
I think Hmm. I felt it's literally a person, every individual ka story, and Exactly. हाँ. it's about loneliness. The theme is Hmm. like how lonely you can be even with surrounded by people. Like even Hmm. though there's no space for you inside a train, and everybody's like up against you, even then you don't Hmm. know anybody, right? You're still lonely But there's only. two things I don't like about the film. Which is? One is थोड़े बहुत inconsistencies मुझे लगे which might just be me. I think whether he Hmm. pointed it out on the group also, uh, being a Mumbaiker, which is that the trains are very empty. And the one reason or logic I could come up with in my head is that they're going in off hours, they're Medical staff would probably medical be stuff. traveling late at night. Yeah. तो वो एक है, बट दोनों टाइम मतलब आते भी जाते भी ठीक है, अब दैट्स हाँ, हो सकता है. हो सकता है, Yeah. वो Yeah. निटपिक है बेसिकली. दूसरी चीज मुझे लगी कि आई थिंक इट टचेस अपॉन सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, बट इट डजंट टेक अ पॉलिटिकल स्टैंड. आई फील द ओनली पॉलिटिकल स्टैंड आई थिंक इट टेक्स इज बाय एग्जिस्टिंग. Hmm. It's so again, yeah, this is almost like a personal pet peeve. It's not a flaw as such, but I felt like they could have done something more with For the whole. sure. उन्होंने बस एक दिखाने के लिए दिखा दिया ऐसा मुझे लगा. जो एक सीन होता है ना जहाँ पे वो अ, वो पत्थर अ, पत्थर फेंकते हैं वो लोग, पत्थर एंड दे फेंकने गो के टू अ मीटिंग. दे गो द टू अ मीटिंग. मीटिंग, या. इट्स अच्छा, सम वन हाँ. सेकेंड, सॉरी, हाँ आई बोलो. नीड टू address some chat. Yash Varshne has given us a super chat. Thank you, Yash, for the support and to get Bharat's dance performance. And Darshit has also given us a super chat with the message, girls will be girls is really good, man, we agree, but we'll get to that. हाँ. Yeah, and we have Web of Munjal in the super chat, in not in the super chat, in the chat. He said sup. What's up, Web of? Hope you're doing well. तेरे को आना है तो आजा. In fact, actually, that could be also fun. हाँ. Also, Web of, I want to, क्योंकि मैं तेरे को इधर पूछता हूँ प्रेशर में. Please watch my film, man. I've sent you the film. अभी देख ले. Please मेरे को बता कैसी लगी तेरे को. Please. बाय द वैभव, I really. हाँ. वैभव के साथ हम गर्ल्स विल बी गर्ल्स डिस्कस कर सकते, बिकॉज ही रियली लाइक, ही रेकमेंडेड दैट फिल्म टू मी एट एंड मामी. मामी, तू बता रहा था मेरे को. हाँ, हाँ, मेरे को करेक्ट. वैभव ने बोला था कि Yeah. ऑल यू इमेजिन तो ठीक है, बट हाँ. गर्ल्स विल बी गर्ल्स देख. हाँ. आई मीन दिस इज तूने एन इनविटेशन. वैभव वैभव का तूने बता दिया इधर. बट वैभव सेड हाँ, हाँ, हाँ. Mon Vita, that's a new person. Nice to have you in this content. Thank you so much. I'm from Delhi and I work in healthcare. So I really loved the representation of young students tackling the ups and downs and the nature of the job. Yeah. फिर तो डॉक्टर्स So देखो आप. डॉक्टर, अरे सर ने भी एक, भरत एज अ राइटर ऑफ अनदर मेडिकल ड्रामा, हाउ डू यू थिंक तुम लोग ने जो पकड़ा और जो पायल कबाड़िया ने पकड़ा उसमें फर्क क्या है? नहीं, अगले साल हम ऑस्कर में आ रहे हैं तो हाँ. पता चलेगा. नहीं, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं पकड़ा है, हमने बस हाँ. एक ठीक है अभी. ठीक है, एटलीस्ट ओके. बता तो दो क्या, हाँ, कहाँ बट पे या है, क्या प्लीज, है, मैं वो, दिस इज डिटेल द तो दो. फ्लग. अच्छा वो. या. अरे so Doctors is basically a show that I've co-written and I'm also the associate director on it, and it stars Sharad Kelkar, Harleen Sethi among many. It's about the lives of doctors in a private hospital, like a very rich private hospital in Mumbai. हम्म. But it's not, I mean, yeah, it's not about the city or it's not about loneliness. It's हाँ. about the opposite. But yeah, you watch it. It's on Geo Cinemas and it's all doing all well, all hopefully. we imagine as Geo Dandanadan, which is Yeah. where you can watch it. Monvita said, haha, yes, I'll watch Doctor soon and let you all know. Thank you so much. And Webber has said, Dekhta hu bro, Harshit told me he saw your film, he loved it. Harshit from Humans of Cinema has watched it. So for this week, Humans of Cinema ranks above Chalchitra Talks for me, but Webber can very easily change that. So Webber, the ball is in your court now. Like the trailer, Monvita has said. So that's cool. Tera trailer, I think, Bharat. Oh, Uh, thank you. Thank you. Title has light, but film is dark. Nani Kaur has said beach mein, sneaking in with a great comment. By Yeah, the way, all right. Himanshu, you know what Himanshu keeps doing to me? He randomly, Yeah. in the middle of the day, he'll send me like 30-second long videos of surreptitiously, his parents are watching my show and they're making like random comments. And Himanshu, like, अरे इसका तो मेकअप ही नहीं किया, इतना बुड्ढा लग हाँ. रहा है. हाँ. अरे all that. And I'm like, they hate watching it at this point, which is great to see. I would actually love for doctors. I love it when people, not just for doctors, anyone who's in a profession, when they Yeah. watch something. I love, that's one of my guilty night type 2 a.m. watches, is when somebody will be like,
this expert watches Yeah. this thing and reacts to whatever bullshit. But yeah. Anyway, all we imagine is लाइट पे हमने खर्चे किए कितना टाइम अभी? Himanshu is It's कर been रहा है. half an hour. So हाँ, हिमांशु. मैं तो भरत का शो के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. अगर Hmm. बोलना. if there is still like a lack of incentive to watch, then I would like to say that there are moments when Bharat just appears for I don't know what, a fraction of a second, ज, and बहुत दूर पीछे कहीं एकदम दिख रहा भी नहीं है, and my parents just like पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, पॉज करो ये है भरत, ऐसा क्या, like hmm. that's how we watch it. Okay, this show, it's like Spot the Bharat. I'm telling you, watch this show and just play Spot the Bharat. Every time you see Bharat na take a shot, you'll जितना not get bored. जितना अमित जी का रोल था ग्रेट गैट्सबी में, उतना ही हाँ. रोल है, तो उससे थोड़ा उससे ज्यादा ज्यादा. रोल भरत का है पर हेड मेरे पता है डॉक्टर क्या का. एक्चुअल हाँ. आई जस्ट हैव मोस्टली आई हैव रिएक्शन शॉट्स हाँ. टू सर्जरीज. तो सर्जरी में ओ, ऊपर क्या होता है, सो सर्जिकल रूम हमने बनाया था वेयर यू कहाँ नो बनाया था? मड आइलैंड या गोरेगांव? मड में ही बनाया था. मड में बनाया so था. so basically what we done is we done a very Grey's Anatomy kind of a हम्म. surgical room जो इंडिया में बहुत कम जगह है actually, where there's like a floor, OT floor, and then ऊपर ऐसे galleries हैं where you can see. या दैट वाज So ओल्ड स्कूल, वो दिखाते हैं ना, दे यूज्ड टू टीच सर्जरीज correct. दैट वे. या. करेक्ट. आजकल थोड़ा मतलब वी सॉ कि एम्स में कैसा दिखता है, हमने रेफरेंस किया था, हम्म. तो बहुत ही बेसिक है बहुत बेसिक दिखता है. तो हमने वो हम्म. कंस्ट्रक्ट किया था. सो ऑल ऑफ माय शॉट्स आर वो जगह को फिलअप करने के लिए कोई चाहिए. तो हम्म. मेरे रिएक्शन शॉट्स हैं कि ओह शिट अब क्या होगा लाइक दैट. दैट्स माय रोल. You were But channeling your IPL type reaction, या fan reactions या suddenly. दैट. हाँ. एंड ऐसा है कि Among, एक शॉट में मैं हूँ फिर अगले शॉट में चला गया हाँ. क्योंकि मेरे को आई हैड टू डू एक्चुअल एसोसिएट डायरेक्टर वर्क. Yeah. तो आई एम हियर देयर टाइप्स. पूरा वही देखा है मैंने, हम लोग बैठ के वही कर रहे हैं बस भरत, बस तेरे को ही देखते रहते हैं. बट यार नाइस. देखो, शो देखो, अच्छी शो है. Watch Doctors, but we have now spent half an hour on All We Imagine Is Late, and we want to be हाँ. disciplined now. So या next, what should we discuss? Should we, क्योंकि अभी जो भी बाकी का है वो सब दो दो के पेयर्स नहीं हम लोग ने देखा है. So गर्ल्स what? विल बी गर्ल्स से I एक बार think yeah. शुरुआत करते हैं बिकॉज आई Cool. थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो कंपेयरिंग द टू. अ लॉट ऑफ पीपल आर Hmm. कंपेयरिंग ऑल वी इमेजिन एंड I गर्ल्स विल don't बी think they गर्ल्स. should. आई रियली डोंट थिंक दे शुड Yeah. बी. आई डू थिंक आई मीन मेरे को कंपैरिजन से ये ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है कि तुम्हें क्या बेटर लगी क्योंकि अ फिल्म कैन Hmm. मूव यू डिफरेंटली. Yeah. I like Girls Will Be Girls a lot, I would say. Same. I liked it more than All We Imagine Us Yeah, Right. Although I loved All We Imagine Us Right, but yeah. I thought this was really something else. Girls Will It Be is Girls, really and good. I'm very sad Himanshu has not watched it, because amongst the three of us, Himanshu has actually lived boarding school life, and the Yeah. film is kind of based on a boarding school, I think. वो मुझे ना हिसाब से, एक्चुअली but बोर्डिंग स्कूल का लाइफ ना देखने में ना थोड़ा ट्रॉमा वॉचिंग होता है, वो पता है. PTSD. हाँ. मुझे थोड़ा देख, आई हैव टू रियली डेडिकेट अ टाइम एंड माइंड, लाइक आई हैव टू मेक माई सेल्फ हम्म. रेडी फॉर दिस. ओके, तो अभी मैं देख नहीं पा रहा. आई डिड, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वाचिंग ब्लैक वॉरेंट एंड ऑल. आई वाज लाइक हम्म. आई विल गेट बैक टू इट. था मेरे सामने वो थंबनेल आया, गर्ल्स विल बी गर्ल्स का, बस ब्लैक अब. वॉरेंट तेरा कंफर्ट वॉच है और हाँ. वो तेरा ट्रॉमा वॉच है Girls Will Be Girls. सच में Good. यही है, सच में दिस इज इट. हाँ. आई नो इट्स उल्टा होता है, राइट? हाँ. इट शुड Yeah, बी. this is like हाँ. basically Yogaraj Singh's ideal man, because it's you know, इसको ब्लैक और जेल से तकलीफ नहीं है भाई, गर्ल्स विल बी गर्ल्स में थोड़ा तकलीफ होगा हमको सर. पर ये मुझे लगा वैसा. अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि सब लौंडे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. भाई हाँ, वी डिड अ पोल इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ हु लाइक्ड एंड हु डिड नॉट लाइक गर्ल्स विल बी गर्ल्स, की थोड़े एक्सट्रीम ओपिनियंस भी आते आते हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी वो महारथी, बट वो ये सब थोड़े ओपिनियन रहते हैं, एंड देन वी डिड अ पोल हु लाइक्ड इट, एंड पांचों जो थे लॉन्डे हु डिड नॉट लाइक इट. सो एंड आई कैन बट सी, बट या लेट्स गेट इनटू द, भरत गिव अस अ लिटिल blurb of the film. Let's सो गर्ल्स विल बी start with गर्ल्स that. या इज अबाउट अ बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे एक ओवर अचीविंग गर्ल है who's our protagonist and she has just been made head girl. Hmm. And it's like a very prestigious thing. She's like the apple of everyone's eye. And how her position kind of unravels when she falls into like gets into a relationship with a guy, and it kind of changes everything in her personal and Hmm. I mean school life. I don't want to say anything more because Yeah, no, fair enough. yeah. So that's And there is a that's character that. of her mother as well, but we'll get into that, which is played by Kani Kustuti. I think she's really emerged as a Yeah. star, like a big star this year, Mhm. if she wasn't already. But
Yeah. So anyway, Girls Will Be Girls, I think मेरे को main reason why I really loved it is because of, when you're in school, a lot of people make films or shows about schools or college, and often we impose on them as writers or filmmakers how to talk. They talk like how maybe of अगर 40 साल का आदमी लिख रहा है तो वो 40 साल के आदमी जैसे काफी बार बात करते हैं. इसमें they are talking with an arrogance that a 12th grader in a premium, a boarding school has. The attitude that they have. They are arrogant and they are ignorant, obviously, but that ignorance, they are ignorant because they haven't stepped out into the world yet, which I felt like uh, in the most spoilery scene that happens towards the very end, which I can maybe talk about when we give a spoiler alert, and Himanshu can do this later. But anyway, to start off, I loved the movie. I thought it's a great exploration of, especially जो दरिंदे होते हैं स्कूल में. If any of you have been boys formerly in school, and school boys are the worst, I think, iteration of men, I would say. I feel Yeah, like yeah. because you're just as you're crossing puberty and you're just getting confidence पूरा है दुनिया भर का, but हाँ. अक्कल मतलब is at -10 level. So, and that I think comes out in this movie as well. And it's a wonderful way to show that, show the interplay of genders, how differently good or bad different genders are. Almost that you get to see that also. It's not always just a one note thing. It's a very complex layer that the movie creates. So I thought it's a fascinating film. It's a very well done, very simple film. Does a lot with very little, you know. Yeah. Um, and I loved it absolutely. I special shout out to Richa Chadda and Ali Fazal for backing Yeah. films like this. I'm glad Bollywood actors and मेरा इसके अराउंड एक, जब हम ब्लैक वॉरेंट पे बात करें, मेरे पास एक नेपोटिज्म वाला रैंट भी है, बट मैं बाद में बोलूंगा. भरत, योर व्यूज ऑन द फिल्म. No, before that, I also wanted to talk about how Rana Daggubati has supported this film, All We Imagine. Yes, yes, He's of course. he's the distributor of the film in India. Hmm. So he's kind of I responsible actually, and then in that case, I got to watch the movie in a theater because of him, because because Rana Daggubati. he did an Indian release. Yeah. Yeah. So वरना yeah, I अभी mean यहाँ पर it's जर्मनी में तो अभी भी चल रही. सो अभी है. acha. Anyway, हाँ. Yeah. So Sorry. a Yeah. lot. Go on. So it's very heartening to see these actors kind of putting what? Yeah, The something money that where their mouth is. yeah, the money where their mouth is. So that's really heartening to see. I agree. Yaar, Girls Will Be Girls. I think it's a very. After watching it, I was surprised that a lot of people, I mean, on the group especially, did not like it because there's Yeah. nothing not to like in it. It's a fairly simple film, but it gets everything that should be got right. Yeah. About youngster, like people who are young, and उसमें भी power hierarchies कैसे काम करती Correct. है, right? In very funny And ways. in very funny मैं ways. मैं ना सुन के भी ट्रिगर हो रहा हूँ, पता है। ये तो सब इतना देखा है। ऐसा हाँ. मतलब ऐसा हाल होता है ना, लाइक बोर्डिंग स्कूल का जो एक्सपीरियंस है, इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स लाइक वेरी बैड, बिकॉज Hmm. there are seniors, right, and then there are juniors, and then juniors have to like do shit for seniors. I don't know if this film has any of it. मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा है। आई थिंक वो आपके स्कूल में नहीं आए थे तब तक, बट आप, आई थिंक हिमांशु, तो मैं कितना टाइम से बोल रहा हूँ भाई तो ऐसा कुछ बना, which is I think you are the right person to explore it. Himanshu told Yeah. me when I met him recently, he told me the sad story of how he went to boarding school for the first time and how his parents left him. Do you want to talk about it, Himanshu? बताओ हिमांशु, बताना तेरे को कुछ. क्लास 5 में मैंने ज्वाइन किया था बोर्डिंग स्कूल, Fuck, तो bro. फिर 5 is early. हाँ, आई Yeah. वाज 9 years old, आई Hmm. थिंक। एंड I thing is, my mom knew that she would cry while leaving me, so she Hmm. told me to go sit in the room, and she said that just be here, we are coming back, and then they went away. तो तेरा मतलब प्रॉपर वो ब्रो, दैट वुड बी अराउंड द टाइम व्हेन तारे जमीन पर आल्सो तारे केम जमीन आउट, पर नो? ना. I उसमें तो वो am सीन भी है भाई, वो माँ वाला सीन. नहीं, तारे जमीन पर came out much later. भाई I तुम्हारे बैच की तो गांड ही लग जाती होगी ना, जो माँ, जब ये सॉन्ग आया था. सब रो रहे I हैं. वो जो ना वो इसका सीन है ना, दरशील सवारी, वो बाथरूम में एक नल का करके रो रहा हाँ. है ताकि कोई सुनाई नहीं दे.
इसके इसके स्कूल में सारे नलके भरे हुए हैं, सारे 100 लोग का रेन डांस चल रहा है वहां पर, बिकॉज सॉरी, बट या वाज इट लाइक दैट? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट सॉन्ग? आई वुड लव टू नो। Yeah, नहीं, आई थिंक I connected to तारे ज़मीन पर on a deeper level because I am terrible at studies, okay? अच्छा। And तू तू I तू बोल रहा था वहां तक, तो मैं समझा ही नहीं। हाँ, तू नहीं, वहां पर मैं तो उस या पे कनेक्ट कर रहा था कि क्या पता मेरे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है, मैं तो वहां पहुंच गया। a lot started making sense to हिमांशु। ओ इसीलिए छोड़ हाँ, के मैंने गए क्या मेरे को? मेरे मेरे हाँ, माय थिंग स्टार्टेड क्लिकिंग एज लाइक, यार बी और डी को तो मैं भी कंफ्यूज करता हूँ। तो फिर शिट, अब फक डूड। मुझे तो बोले या कोई कोई पर तू टीचर तो पेंट बोले। करता नहीं था ना, प्रॉब्लम ये था। पेंटिंग भी हाँ, अच्छी नहीं करता था। तो कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ फोटोग्राफी मेरे हाँ, फोटोग्राफी करता था फिर हिमांशु। फोटोग्राफी करता था हिमांशु भाई। फाउंड हिज। Also, हाँ। Himanshu is quite, I mean, I would say more intelligent than me because in college ये he, क्या ये क्या कंपैरिजन ऐसा the है? comparison बता रहा हूँ हाँ क्यों? हाँ। Because he's fucking good at math, dude. He's so good. वो He's तो वो तो धंधे वाला excellent. आदमी है ना वो तो। वो अभी हूँ मैं मैथ्स मैथ्स हाँ में। वही, हाँ कॉलेज में कभी लगा नहीं मुझे ये वो सब। क्या है ना, मैं अभी दुकान में बैठता हूँ, कस्टमर्स आते हैं मेरे, मैं मेंटल मैथ जब तक कैलकुलेटर पे बटन दबते हैं ना उससे पहले मैं नंबर मैं गिन लेता हूँ। फिर वो कैलकुलेटर बस कंफर्म करता हूँ कि वही है ना, और फिर कर देता हूँ। भाई तू वो कभी अभी किसी है। तू कभी आदित्य, तू कभी किसी दुकान पे गया, एक्चुअल दुकान एकदम ना, भाई, मेरी तो फैमिली वहां, है भाई, मेरी नहीं नहीं वो हाँ, फैमिली वाली इसका नहीं, भी बिजनेस ही तो करती इज है। ऑल्सो अरे बिजनेस वैसी मैन। दुकान नहीं, लाइक जो एक किराने की दुकान समझ, ठीक है। किराने की दुकान में विजिट करता हूँ एज अ कस्टमर हाँ विद तो माई दैट्स ईयरफोन्स व्हाट। ऑन। या So how सो people like go या through it like so quickly ना, कि कैश निकाला टक 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 दे दिया, you हाँ know, हाँ। that is हिमांशु वो exactly, कर। that is Fuck, I Himanshu wish himself. I could have come for this trip यार। For context, we were all supposed to go to the northeast, और फिर last minute मेरा वीजा आ गया तो मैं कट लिया। So, but yeah, I really missed that trip. Fuck, I would have loved to see Himanshu in his natural habitat because we've heard so much. It's like Yeah. I have this image of Guwahati and Assam from Himanshu, but yeah, ऑल which I wanted to validate ऑल वी इमेजिन एज as गुवाहाटी। Guwahati. Yeah. Guwahati. Anyway, sorry, we are talking about girls will be girls. मेरे को Bharat, I wanted to ask you, in terms of the characters, what did you think of the interplay of Kani Kusruti and the, this is slight spoiler territory, half, matlab this you will, I guess, even from the trailer, you will feel that, which is Hmm. there is the interplay between the mother and the daughter's boyfriend, whatever, boyfriend and her. So there is Himanshu, for context, the movie is kind of like a not exactly, but like, should I say this? It's like नहीं a, हाँ ज्यादा हाँ। मत बता इतना, क्योंकि एंड आई थिंक वी शुड ठीक है। डिस्कस दिस एट अ लेटर पॉइंट, आई फील पर्सनली, क्योंकि कई लोगों ने हम्म। आई थिंक फिल्म देखी या अभी अभी पता नहीं कब आई Wow, मुझे। fuck, dude. This is, I'm gonna cry. Nani Kaur and philosopher have said Aditya looks like Riyan Parag. I don't look like Riyan Parag, first of all. That is a that is a comparison I तेरी सर्च despise. हिस्ट्री दिखा आदित्य, मैं अब तो अपनी टाइम आ सर्च हिस्ट्री गया। नहीं दिखा रहा यूट्यूब के। मैं नहीं दिखा रहा भाई, प्लीज। क्योंकि फॉर कॉन्टेक्स्ट, हिमांशु तेरे को पता है ना क्या हुआ था ये भी असम का ही पता क्रिकेटर है। है ना, रियान पराग। हाँ, रियान हाँ। पराग इज फ्रॉम भाई गुवाहाटी। रियान पराग की ना सारी पूरे गुवाहाटी में होर्डिंग लगी हुई है भाई। मैं पागल हो गया, मैं कहा फक ये क्या चल रहा है, रियान पराग इज बिग हियर। Least serious state in the country after Uttarakhand, sorry, but आई नो द कॉन्टेक्स्ट उसका। ही शेयर्ड स्क्रीन फॉर समथिंग एंड देन yeah, कुछ लिखा एंड देन कुछ नहीं लिखा था यूट्यूब पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब। like, forget the cheapra nature of this, okay, but like, even from a technical standpoint, he had searched Sara Ali Khan hot and Ananya Pandey hot, okay. First of all, who searches यूट्यूब। anything porn related, or like even like your personal time, I'm not judging, whatever related to that, why do you search on YouTube? That's like the worst. What are you talking about? Who does that? That stood out to me the most. That maybe IPL players need some technical training. Yeah. So Sorry. हाँ, what Yeah. you asked me about what I feel about that relationship, right? Yes. What did you feel? Did that come across to you? Did that hit Yeah, you well? I think I think again in a weird way it's also about loneliness, right? About of the Hmm. mother, because I don't think it's fulfilling any kind of beyond like a need beyond that. It's not a, I would say, sexual need.
It's No. more of companionship, more like, oh, this is the same wavelength as me. But Hmm. then towards the end, spoiler alert, हिमांशु कान बंद कर ले इसके लिए. सच में कान बंद कर ले. हाँ. हाँ. Towards the end, she realizes she's being played, Yeah. and then she is like, अब तू बच्चा ही है अभी तूने. Exactly. And when I was Yeah. saying that ignorance wala line, na Himanshu Bandrak. So when I was Yeah. saying the ignorance wala line, that's what I meant to say. When he, as till then, Yeah. he's like, oh, I am Yeah. like Yeah. smart. I'm not like these idiot boys who's I can Yeah. just, manipulate my way into whatever. So, and when he is ignorant, even this, he is Yeah. an idiot because he says it out He loud, says thinking it. that it's He says something, the thing. that it's something. And dude, my favorite, I think probably my favorite shot or cut of this year, okay, which was that जब भी वो at the end when he's asked to leave, so he's standing at the door and Panigra is standing and looking at him, and there is a shot of him, then her, then Yeah. him, and then back to her, and you see Kani Kusudi standing in the Yeah. 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 background in that out of focus. But dude, Yeah. Great shot. what a great cut! Great shot. That I felt like okay, Even cinema, even that when Kani was smiles at him when he yeah. says the key thing and then pats him on the shoulder like this. Yeah, Like yeah, अभी तो yeah, बच्चा है. yeah. तूने प्रूव कर दिया कि तो अभी बच्चा है. So Correct. that was sudden shift of power in that situation, which was really Exactly. cool. And मुझे even like I loved the shot on the terrace जब उसकी वो when she's oiling her hair. Hmm. But this shot hit me much harder just in the cinema language of it because मेरी गांड फट गई भाई जो मैं देख because Hmm. I did not expect that you could tell the whole story of this movie kind of Yeah, in in that. like such a simple cut, and Yeah. that I felt was genius. I'm so excited to watch more of her work, shuchi uh, Shuchi Talati. Talati, and also Preeti Panigri. I think is a wonderful actress. That guy played Oh yeah. like मतलब अभी क्या ही बोले, उसको but like it was झापड़ just मारने का मन कर रहा था yeah, पूरे टाइम. exactly. So and I like you can remember so many people like that. Yeah. From school. Like it's just मेरे को तो इतने flashback आ रहे थे भाई, मेरे को तो थोड़ा वैसा हो गया था, but it was very 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 it good. was a very good watch, and I think it's important for everyone who's had any kind of school life experienced in India. I think it's a must watch, and I think Yeah. I told my parents to watch it. They loved it. They could also relate with it. Matlab, it's such a Hmm. school is such a time warp, Yeah. time locked space. Now that you can just it kind of grounds everyone. Everyone goes Yeah. back to that like automatically. Yeah, Himanshu, तू वापस आ सकता है by the way. I don't think he can hear ये us, चले ही but गया भाई. चले गया चलो. आ गया आ Okay. गया आ गया. आ I गया. think he's Okay. back. You can come back. Yeah, Good yeah, stuff. yeah. I'm here. Yeah. I So we're didn't School is done touch. with. yeah. Sorry. बोलो. School is trauma and trauma is school. Nani Kaur has said, but he said trauma instead of trauma. So I think we can end on Girls Will Be Girls on that Yeah. note. Love the film. Absolutely amazing film. Watch it for sure. It's on Amazon Prime, I think. So yeah. Um Yeah, I What think we're next? done with Girls Will Be Girls. Oh, we're making great time. We're Yeah. doing great today. I think we What should spent we only discuss 20 now? minutes. We have some 5-10 minutes before we move on to Black Warrant. If anything else you all want to talk about, anything culture related or any तुम such लोगों ने thing. Geogra योगराज का. हाँ, Yeah. मेरे को यही कल्चर रिलेटेड मुझे ऐसी बात पे बात करनी थी. यार, I don't know how I feel about it. What? Do you think Samdesh overdid like a old guy's dementia thing? Like he, One that thing. I Hmm. firstly, can I just say, I love Sandesh. I think in a sea of mediocrity of podcasting and that style of podcasting where you interview interesting personalities, right? Uh, in a sea of mediocrity, he shines out, I feel, of his generation and his sort of ilk. His like, other podcasters, I feel uh, I don't like their even if they get a crazy person to talk about something, it's like, oh look, we're getting this crazy person. Hmm. Samdesh kind of embodies that. He doesn't and he questions them. He questioned Nitin Gadkari. For example, I Yeah. watched the Nitin Gadkari interview and he actually like straight up asks heavy hitter questions that probably nobody has asked Nitin Gadkari in the past 10 years. Where I thought the Narendra Modi interview with Nitin Kamath is disgusting and it's a travesty. मैंने अपना इंस्टा एक बड़ा सा पोस्ट लिखा है, किसी को अगर जानना है तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. आई थिंक इट इज अ वेरी बैड साइन फॉर थिंग्स
to come, I think. But it's a nothing Um, burger, right? I mean, I started and then it was over. yeah, Like that's दो my मिनट में point. पता चल. That's my हाँ. point. This is a guy who's leading a country for the your country for the past 11 years. उसके अभी लोग इंटरव्यूज रील्स निकाल रहे हैं जहाँ पहले खुद बोल चुके हैं इसको कितने प्रॉब्लम्स रहे हैं. Even if you don't want to consider, even if you are like, oh, you are, I am a stupid liberal who only cares about liberal values. अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड से भी जज करें तो GDP and all of those things, and economy is not doing as well as it was once. There are a lot Yeah. of things that are wrong in the country. And you get this guy, there is an entire state which is at civil war. You get a guy and you are asking like fluff bullshit. I think I also, this whole, I saw the comments of it with a lot of Tanmay Bhatt and all these people celebrating it like, oh my God, world has changed. Oh my God, this is amazing. You have killed podcasts, will never be same again. No, it is, what are you saying? He just got, मैं ये कह रहा था that on my Instagram कि dude, this guy is like a billionaire. नितिन काम like उसके लिए meeting Modi is like me meeting like a mid-level producer at a company. You know what I'm saying? At a Hmm. production house. It is not much different from a colleague meeting another colleague. In fact, the reason I thought this was bad is because I think Modi considers Nitin Kamath enough as Nikhil Kamath, sorry, as a person who he can talk to as an equal, whereas he looks at journalists as even the journalists who suck up to him. कभी कभी तू देख उसका interview. He still shits on them only. Okay, like it's very sad. So I just feel like this will herald in an era of uh, politicians को चाहिए क्या इंटरव्यू से एयर टाइम एंड व्यूज राइट दे जस्ट वांट कवरेज ऑन देम अगर उनको वो कवरेज मिलेगी without going to news media which They even will get however it. biased they might be they will have to ask some they have to Yeah. have that pretense भाई वो लोग क्यों जाएंगे कभी भी न्यूज के पास आम आदमी पार्टी इज डूइंग दैट नाउ आई थिंक Yeah. it's a terrible sign of things to come and I think everyone who's sort of celebrating it is missing the forest for the trees और योगराज सिंह पे भरत तू बता तेरे को कैसा लगा नहीं, मुझे I felt कि I didn't find it exploitative for the reason that you said, that he kind of हम्म questions it. He, for whatever it's worth, he is not being like, he's not taking a jab at him or his senileness, whatever it is. It is senility हाँ him just being him, right? हम्म Also, तुम उससे मिलने से पहले तो तुम्हें नहीं पता नहीं कि वो कैसा है, right? You've done an योगराज interview. सिंह तो पता ही है भाई नहीं योगराज मतलब, सिंह तो फॉर आई थिंक एग्जाम्पल इवन हाँ लुकिंग एट युवराज सिंह इंटरव्यूज, आई डिड नॉट नो कि वो इतना अनहिंज्ड आदमी, मतलब लिटरली हम्म पागल आदमी है, राइट? उसके, राइट युवराज सिंह ने खुद बोला है कि माय फादर इज नॉट या फुल, या मेंटली स्टेबल. सो हम्म आई मीन, पार्डन माय वर्ड्स, बट मेरा मतलब ये नहीं लिटरल पागल से, मेरा मतलब हाँ if you have some kind of mental instability, you can tell it. So, या नो फॉर श्योर and I felt that while he was in it, while Samdesh was doing that interview, he realized this, and then he also says that he kind of started like becoming his therapist. या कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो, like he was कुछ telling करो. him also by the end कि can do you think you should talk to someone even if not a therapist just talk to somebody about Yeah. everything you're and a lot of some things I liked in the interview but not what is भाई मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा है एक कॉन्सेप्ट है विच इज वर्चू सिग्नलिंग तुम लोग को पता है ना हम्म. वर्चुअल सिग्नलिंग होती थी 2016 से 2015 से 2018-19 तक ठीक है इंटरनेट पे एक फ्लिप हुआ है आफ्टर दैट विच इज आई फाइंड मोर डेंजरस विच इज वॉइस सिग्नलिंग people हाँ want to हाँ. signal the fact that I also believe in this terrible thing that you believe in and everyone does it and it's done with a tongue in cheek or a click of an eye or whatever but एनिमल का बाप. yeah वैसा but I think the more you say it the more it is becoming acceptable to say shit like Yeah. उसको औरत को ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो डुबा मतलब just ridiculous unhinged anarchic things to say Yeah. And dude, like a at one point lunatic he yeah genuinely becomes unhinged. I mean, yeah ये सब मुझे लगा garden variety हाँ female hatred, ये सब लगा. But dude, at हाँ one point he goes really caustic and he says उसका बच्चा मर गया, वो पता ना क्यों मरा उसका हाँ बच्चा एक्सीडेंट yeah में, it was कीड़े very में. fuck मैं कहा, भाई क्या ये मतलब. and this is the kind of vice signaling I hope will be used as much as virtue signaling was और जब virtue signaling ज्यादा होती थी तब हम वो भी बोलते थे आई थिंक कि भाई हम्म. ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है अभी उल्टा हो चुका है अभी नथिंग इज वोक अभी कोई या. अगर तू बोलेगा कि भाई वो बूढ़े आदमी को स्टेशन पे प्लीज झापड़ मत मार बोले अबे भाई तू वोक है क्या भाई वो वोक की बात नहीं है यार एक नॉर्मल डिसेंसी भी होती है ना इंसान के अंदर वो भी तो एक एक एग्जिस्टिंग फैक्टर है ना
एनीवे तो मुझे वो एक प्रॉब्लम लगा उसमें, बट आई द थिंग आई लाइक्ड अबाउट इट इज सम थिंग्स लेट स्लिप, व्हिच इज दैट योगराज सिंह इज लाइक मेरे को छोड़ना है अपना हेट्रेड, बट वो जा नहीं रहा. आई थिंक दैट्स अ हम्म, जेन्युइन इमोशन, दैट्स अ जेन्युइन थिंग ही सेड. हम्म, एंड इट्स समथिंग दैट ही फॉर श्योर. भाई कपिल देव का उसने बोल, डिड भाई यू गाइस हियर द स्टोरी? या हिमांशु या तूने या सुना? मैंने सुना, like he went and he had a या gun with him and then He he said he tried to. pointed the gun at him. Yeah. and he's like the only reason I didn't kill him is because his mother He was had a there. very he had a very Yeah, pious mother. pious mother. Yeah. मैंने Like सुना है भाई. पूरा इंटरव्यू। Yeah. एक तो वो जो जिस तरीके से खड़े थे ना, जो डिस्टेंस था उनके बीच में, मुझे लगा कि मैं टीवी से 2 फीट और दूर हो जाऊं ताकि हाँ. मैं इनको स्पेस दूं। ये पीडीए होने वाला है यहाँ पे, 3 लोग You know what that फील्ड के scene बीच looked में। like? वो हाँ थ्री इडियट्स में जब आमिर खान और बमन ईरानी खड़े होते हैं और आमिर खान उसको हाँ, बोलता है ना कि ये आप मर्डर है। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, मर्डर. हाँ, अगर वो योगराज सिंह, वो सेम शॉट्स थे वो, और योगराज सिंह होता तो बोलता हाँ मर्डर किया मैंने, तेरे को ही ठोक दूंगा अभी. बंदूक ये निकाल तो, के. डू यू थिंक योगराज सिंह फेस का साइज इज लाइक ट्वाइस हम्म. एवरीबॉडी एल्सेस? लाइक I think that's what helps. No, with the it's the beard also beard. ना, It's with the just the beard. beard. Have you seen If him you want to without see, the? हाँ, Yeah. भाग मिल्खा भाग में देख भाई उसको, अजीब ही है वो, He looks like हाँ, नॉर्मल है normal वो। uncle only. हाँ, Yeah. Normal. If you've been to, I have a lot of family in Punjab. It's normal Punjab uncle is like what I feel is what he looks like. But but basically, ये हाँ, someone Mohan Vita said Kapil Dev replied by saying Yograj Singh कौन? Yeah, सीरियसली। somebody, I saw that video. Somebody व्हाट took द the camera फक। to कपिल देव सेइंग कि सर एक पॉडकास्ट में योगराज सिंह जी ने कहा है कि उन्होंने आप पर बंदूक तानी थी, क्या ये सच है? तो कपिल देव ने बोला कौन? कौन योगराज सिंह? एंड देन उसने बोला सर युवराज सिंह के पापा. तो फिर वो बोलता है ओह अच्छा अच्छा ओके, नहीं नहीं कुछ. एंड ही जस्ट सिट्स इन हिज कार एंड गोस अवे. आई एम लाइक डूड ऑब्वियसली इट्स आल्सो सच अ रिडिकुलस. उसको वो बोलता है उसको युवराज सिंह को बोलता है बट कपिल देव आफ्टर ऑल डिड विन इंडिया द वर्ल्ड कप. He's like, so what? My son has won too. I'm like, भाई ये कोई तरीका नहीं होगा. ये क्या मतलब है? Like, what do you mean your son has won too? ऐसे तो लाइक सचिन अगर मेरे पड़ोस में रहता था मैं भी क्लेम करूँ क्या? ये क्या मतलब हो? एक So बात बताओ, थोड़ा टाइमलाइन क्रिकेट का समझाओ। युवराज सिंह इसका सीनियर है, जूनियर है कपिल? नहीं नहीं, अराउंड सेम, सेम मेरा. डिड कपिल से थोड़ा दे प्ले यंग है टुगेदर? वैसे। दे प्ले नहीं नहीं, टुगेदर? सेम टाइम ना, सेम टाइम ना, सेम। सेम टाइम आई थिंक. ओके। Because I think he played one match ना, one series he played ना, न्यूजीलैंड. By the way, एक तो ये बहुत फनी चीज लगी. I immediately went and looked up Yuvraj Singh statistics. I would recommend everyone to watch that interview and just look at his not international उसने I think 3-4 मैच ही खेला है जो भी, okay only. And उसके जो first class statistics, his average is I think bowling average, batting average 5 or some shit, okay, but he was a bowler I guess. And his bowling average is like 26, 27 in first class cricket. So I'm like, bhai, 26, 27 in Ranji is nothing to fucking write home about. Like it's, then I think I'm on Kapil Dev's side on this one. What the fuck? Like it's very हाँ मतलब ridiculous. उसको ड्रॉप किया होगा Yeah. क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहा होगा, मतलब Exactly. as simple as that. Yeah. Hmm. Anyway, so yeah, that's out of the way. Let's talk Yeah. about what next. 33, thank you. Yes, 33 views, 33 viewers currently. Please like the stream. Also, the way how this content is a very small podcast and we don't intend to grow it unless it happens organically. How you can help us grow it organically is if you like talking about movies and shows, and just pop culture in general. We have a WhatsApp group called This Content WhatsApp group. You can join it by becoming a member of our YouTube channel. You can click the join button, become a member, and maybe we should reduce the price also of the membership so that we get a lot more people joining in, because I feel like I want the WhatsApp group also to have more, although it's already very active, but I want more diverse voices somewhat. So yeah, we can talk about this after the episode. But yeah, please please join the WhatsApp group and join the channel and support the podcast. Now, Black Warrant or Nosferatu, which one do we want to talk आइदर, about? तुम बिकॉज लोग आई थिंक बात ज़्यादा करो। लंबा कॉन्वर्जेशन नहीं होगा। आई थिंक किस पे? नस्फेरातु, फॉर बोथ, बिकॉज आई डोंट Hmm. थिंक पीपल हैव सीन इट। बट Fair लाइक दे बोथ enough. रिकमेंडेशंस, मतलब अगर अभी लगी है, अभी आई है, तुम लोग देखो, बुक भी पढ़ो। Hmm. नस्फेराटू तो आई थिंक इफ यू गैस कैन वॉच द ओरिजिनल, द ब्लैक एंड वाइट हाँ जर्मन फिल्म दैट वाज शॉट विथ like the German cinematography. एक है ना, what is that thing called? That shooting style, I'm forgetting.
तो Expressionism. हाँ, जर्मन German एक्सप्रेशनिज्म. German expressionism. expressions. Yes. Basically, Yeah. in that original, the reason why the original is very popular till to date is because it was the one of the first horror films. Yeah. And what they did was they basically to make it scary for the camera, which is like a उस समय का कैमरा इतना अच्छा नहीं होता था ना, ब्लैक एंड वाइट. तो टू मेक इट स्कैरी, टू गिव द राइट इफेक्ट, दे बेसिकली पेंटेड shadows to make it look long, and they did a lot of things. So the way they made it was very ingenious. So that's why it was crazy. I think just the legacy of that film like transcended into this film because story to chalo same hai, but they killed it with the technicality. Yeah. Like I think the reason why I loved Nosferatu is because of the shooting style and the sound design and the visuals and the editing and the whole thing. वैसे तो story ठीक है, Base. ठीक है, नॉर्मल है, जैसे जो था वही है, सेम ही एकदम कट टू कट है, कुछ डिफरेंस नहीं है. हाँ, नहीं मतलब उसमें, सो आई मीन फॉर कॉन्टेक्स्ट अबाउट नॉस्फेराटू, नॉस्फेराटू इज एसेंशियली अ टेक ऑन ड्रैकुला द बुक, बट उस टाइम पे वो लोग राइट्स नहीं ले पाए थे, तो उन्होंने नाम वाम बदल के हल्का सा अपना चेंजेस करके नॉस्फेराटू बनाई थी 1940 1924 में, सॉरी. Fritz एंड इट इज Lang. अ, सॉरी, Fritz Lang, right? नो नॉट फ्रिट्ज लैंग एज फार एज आई नो. बाय द वे तेरी Fritz आवाज एकदम Lang. कम हो गई है मेरे मेरे Sorry. में. या, बेटर नाउ, सडनली गॉट Okay. बेटर नाउ. या, Fritz Lang की है क्या Nosferatu, the first नहीं, one? आई मैं डाउट, आई गूगल थिंक कर लेता हूँ. is by Okay. somebody else, I think. So at that time, it was pioneering, as Himanshu said. Here, what they've kind of done is they've kept the story same, but they've FW, added. FW Murnau. FW Murnau. Uh, Yes. Sorry. is it the same guy who did Dr. Caligari? I think so. है ना? Yeah, मेरे को ना, or that is no, by, no, one of these is by no, Metropolis is no. by Fritz Lang. Metropolis and And M are by Fritz Lang. M, yeah, M. That's हाँ, the one I was thinking about. M. That was a But fucking cool movie. M yeah, was a I very think cool movie. हमें जो कॉलेज में दिखाई थी उसमें से मुझे डॉक्टर कैलिगरी भी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत बिकॉज अच्छी दे, थी वो भी. फॉर पीपल हु माइट नॉट नो, वो अगेन साइलेंट एरा के जमाने की फिल्म है, सो द कैमरास वर नॉट दैट ग्रेट, इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट, But these देयर are वाज all नो fun silent films. Like these and are all very very, fun. very fun. So Dr. Calgary में what they do is they use painted sets which are Hmm. crooked. So the doors are crooked, the cabinets are crooked, everything is like teda. So it Hmm. gives a very fun like illusion of सब कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा है It's types. like There cartoon is horror, a like Yeah. Scooby-Doo horror, basically. It like looks Courage the Cowardly Dog. Also, there is a filmmaker Hmm. that does it even now. Recent Delicatessen Beetlejuice जिसने में था. बनाई है. Beetlejuice में वो था तो ये. टिम बर्टन तो करता ही है, बट Tim ऑल्सो Burton. एक और इंडी फिल्म मेकर है जिसने डेलिकेटेसन बनाई है. एंड एक और फिल्म बनाई है विच वाज Oh, क्रेजी, I don't know. समथिंग चिल्ड्रन समथिंग. इट वाज वेरी वेरी गुड. मैं आई ट्राई टू थिंक ऑफ द नेम हॉरर बट मूवी या कॉमेडी क्या है मतलब वो? नहीं, it's one of those Okay. expressionist horror comedy kind of zone. Yeah, it's Nice. very, very interesting. I'll find out the name. You guys keep talking about Nosferatu. Although Bharat and I had the chance to watch Nosferatu, the old one on Oh, screen right. at Regal. So yeah, So that it's was fun. basically the same story, Aditya. Hmm. Same. मतलब Okay. beat same है, but हाँ. इन्होंने थोड़ा सा ना, they've given a backstory to the female character. हाँ. As to, अभी इसको spoil नहीं करूंगा चलो मैं, but there Hmm. is an allusion to female sexuality in a bigger way, Okay. which is why I feel like थोड़ा ना मेरा theater experience spoil हुआ, because Hmm. I could tell कहाँ पे sexuality sex cut कर दिया, you know. Hmm. There are, I think, two or three very big, like not big but like very passionate sex scenes, Hmm. and I thought that that was the point of the film, in my opinion. ऐसा मुझे लगता है. It's about female sexuality and repressiveness and all that. द हाँ, स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट द क्लाइमैक्स में तो बहुत कुछ कटा है. वो बहुत कुछ समझ होता में है. आ रहा है, नॉट जस्ट कट है, दे हैव डन लाइक आई थिंक द फिल्म Yeah, मेकर्स न्यू दैट इट विल गेट कट. सो फॉर लाइक आवर कंट्रीज, आवर शिट कंट्रीज, दे हैव कम अप विद अ वर्जन विच इज ऑल एडिटेड yeah. एंड ऑल सीजी, जिसमें उन्होंने कपड़े पहना दिए सबको भाई बेसिकली. गाउन पहना दिया है औरत को, दैट दे मतलब Okay. हैविंग. पूरा फिल्म का. Oh, the Naked Woman. द नेकेड वुमन हैज बीन ये लाइक, जैसे ओपेनहाइमर में इन्होंने कालिक पोत दी थी ना जो. ओपेनहाइमर ने बहुत गंदा किया था, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता है, शायद Okay. पहना है कुछ. Okay. So, That kind of a thing. by the way, guys, 36 people watching and there are 19 likes. Wow. Please, I'm guessing five of you are hate watching, but I refuse to accept there's more than that. So please, let's just bridge that gap, please. Also, the filmmaker I was looking for, and this is, I guess, also a recommendation, is filmmakers are Marc Caro and Jean-Pierre Jeunet.
Jeunet. Their films Delicatessen and City of Lost Children. City of Lost Children and Amelie also was by this person, Oh, right. Jean-Pierre Jeunet. City of Lost Children is a crazy, very, very expressionist, very cool film. I thought it was very nice. मैंने Um, डेलिकेटेसन देखा हुआ है. हाँ, That is Delicatessen crazy. देखो. हाँ, Hmm. that is very crazy. Worth What's watch. that about? It's like a place where people are getting fed human. Is that Yeah, it? yeah, I think so. It's Delicatessen. something like that. तूने हाँ तो स्पॉइल तो नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं, नहीं. दैट तो गिव्स दैट, देख. वो पहले 5-10 मिनट में ही वो आई थिंक ऐसा कुछ है, बट हाँ. इट्स अ वेरी 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 कूल लुकिंग फिल्म, वन ऑफ द कूलेस्ट लुकिंग फिल्म्स इन फैक्ट आई थिंक. Okay. 40 people watching. Thank you so much, guys, and Thank please you guys. like the stream. We've spoken about most of the things. I think we can move on to Black Warrant unless you guys want to talk more about हाँ मतलब Nosferatu. I नॉस्फेराटू आई would वुड recommend रेकमेंड it. मतलब देखो यार ये सेम. film यहाँ जरूर पर देखो विजुअली बहुत दस सही. यहाँ पर 10 यूरो की टिकट है. मेरे को बताओ, मेरे को जाना चाहिए कि नहीं? नहीं. नहीं, 10 यूरो is नहीं around what? It's around $800. नहीं, $1,000 ऑलमोस्ट. 1000 bucks ना भाई तो मत. वेट नहीं कर ना, लो. ठीक है, मैं नहीं जा रहा. मेरे फिर को तो यार बैड यू एस नो रवि कुमार ही देख. बैड एस रविवार देख लूंगा. बट आई वेंट, ओ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस आल्सो. यार इधर पता है, यहाँ पर एक थिएटर है बैबिलोन. इट्स लाइक अ वेरी आइकॉनिक प्लेस. उधर दे वर प्लेइंग मॉडर्न टाइम्स, हाँ. चार्ली चैपलिन विद अ लाइव बैंड. पर बहुत महंगा था. प्लस मैंने ओ कॉलेज में भी सुबह उठ के देखी थी, तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, छोड़ो. बट ये सो एक्सपीरियंस अच्छा है. मतलब दिस इज लाइक वंस इन अ वंस हाँ, व्हाटएवर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. हम्म. fair, yeah, that does make sense. Maybe I can still go. I'll find out. Let's नमक see. में आज नमक में देख लियो तू. अब तू. नमैक में देख लूंगा मैं. और मेरे को या. ये क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने एक इंडिया इंडिया फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, जर्मन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी करी थी, जहाँ पर समोसे और वड़ा पाव और ये सब भी मिल रहा था, जो मैंने खाया. अच्छा था एंड क्या? गुड 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 ऑल्सो. ओके. फैटर देन नॉर्मल, विच वॉज वियर्ड बट गुड. तो सो है कहाँ ये भी बता. आई थिंक लोग मैं अभी. बर्लिन, आई मीन बर्लिन. सो हाँ. उधर इधर फेस्टिवल चल रहा था एंड आई वेंट टू वॉच डिस्पैच, which is I thought I can maybe कुछ शब्द उस पर भी हो. It deserves, हाँ हाँ maybe we हाँ. can do an episode on वी Kanu, कैन. because आई एक्चुअली आई वांट टू वॉच इट एंड डिस्कस इट क्योंकि मैं please प्लान कर रहा हूँ please देखने को. I request, Himanshu, did you like Shanghai? वैसे. Because I know Bharat loved it. Did you आई like लव्ड इट. Shanghai, Bharat? Himanshu? या हाँ, दिवाकर. so please watch Dispatch. This डिस्पैच कहाँ is पे है? Z पे है, जी में. Z5 पे है. ओके. तूने सो वहां देखी है Z5 पे? मैंने थिएटर नहीं. में देखे. यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल पर क्यों वो लोग Z5 पे Yeah. लैपटॉप पे दिखाएंगे मेरे भाई, बट मैंने थिएटर में देखी. एंड हम आई लोग मेट हाँ. Kanu Bell बोलो. also after that, which was fun. I have also invited him to the podcast. Maybe that works out. Let's see. But oh, can I do some तो name स्टोरी name बता. dropping? Name हाँ. हाँ dropping भाई, बताओ. मुझे वो स्टोरी ठीक है. सुना है, मुझे जानना है. हाँ. So I work with Atul Sabharwal, or I have worked with him in the past. He is the director of Jubilee. He's a writer of Jubilee and director of Berlin, Jo Esi Salai, and Powder and Class of '83 and Aurangzeb. So I went to meet him and I went for the Berlin ka screening also. So I was hanging out with him after, and we went for lunch. And with us came Shekhar Kapoor. So I was having lunch with a few more people, and um, अतुल एंड शेखर कपूर, विच वॉज अ वेरी ट्रिपी एक्सपीरियंस. मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं ज्यादा उस टाइम पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब बिकॉज दे हैड ऑलरेडी मेट ऑल द फैंस एंड देन वी वर ऑल गोइंग फॉर, तो मुझे ऐसा लगा अब मैं ऐसा 14. अटक गया भाई. अटक गया ये. आदित्य ना एकदम मोमेंट पे अटकता है. अब मैं ऐसा 14 हूँ. है तू. इंटरनेट तेरा है. सा आ गया जो सर आई एम वेरी दिस और द फक. ओके, एम आई you're बैक? back. या you're ओके, back. तू मिस्टर इंडिया हो गया था 2 सेकंड के मैं मिस्टर इंडिया हो गया था. लिए. मासूमियत में मैं मिस्टर इंडिया हो गया. बट पानी पी ले थोड़ा सा. अरे एलिजाबेथ नहीं, सॉरी. सो basically yeah, I was having lunch with these guys. I just wanted to share this name dropping moment because I thought this was very cool, although we didn't really talk much, but it was fun. It was a fun experience. तो उसी फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट में आई सॉ डिस्पैच. आई थिंक हिमांशु, प्लीज तुम दोनों देखो. आई हाँ. लव्ड द मूवी एब्सोल्युटली एंड वी विल डिस्कस मोर ऑफ इट maybe उसी next से time. रिलेटेड मेरे भी रिकमेंडेशन है. मैंने आगरा देखी आफ्टर अ लॉन्ग हम्म. टाइम. भाई बहुत सही मूवी है. मुझे समझ नहीं आ रहा लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हो वो फिल्म. ये हम्म. ना ऐसी कुछ फिल्म होती है जिसमें मुझे लगता है कि क्या मैं गलत हूँ या फिर क्या है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना ऐसा कई बार.
राइट आई राइट, बीन नहीं नहीं, वो तो हम आई सब जानते ही हैं। करेक्ट। तो इतनी सही मूवी है यार, और उसका हाँ। ओपनिंग सीन ही, मैं ओपनिंग सीन बता रहा हूँ तुम लोगों को, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ टेस्ट ऑफ इट. हम्म The scene opens with a typical like lower middle class family in Delhi. हम्म I want to, nahi, in Agra, sorry, हाँ, हम्म Agra, in Agra. नाइस, या And you know Mohit are the guy, जो डूबा सो पार, जोडूबा सोपार, हाँ यस। उसमें main guy. So he is eating with his family. Suddenly his girlfriend appears, okay, and then he starts to fuck her on the table, okay, with everybody हाँ else also on the table. Then we see what they're eating. They're eating gilheri, okay, they're eating the meat of ओके, gilheri. And हाँ while he's fucking her, the gilheri starts, the flesh of the gilheri, not even like it's a skinned gilheri, it's हाँ, like meat, समझ गया मैं, starts to हाँ move, starts to हाँ, move. And he ओके, gets startled by it. And then when he turns back to the girlfriend, it's the gilheri in life form that he's हम्म, fuck. And yeah, that's the opening scene. amazing. So So I would love to watch this movie now even more. But Dispatch is actually it has a lot of sex for sure. I didn't have a problem with हाँ it because a lot of people, even in the theater, I was hearing people complain कि इतना फालतू में सेक्स सीन डाल, Q&A के टाइम पे लोग ऐसे फूस फूस कर रहे थे कि इतना सेक्स सीन डाल दिया. एंड आई एम लाइक, हाउ सेक्सलेस आर योर your lives? I'm yeah just saying, do people know that other people are having sex while you're watching the eighth Tarkovsky movie for the 17th time? I don't know. But there are other people right now who are currently fucking, which is a thing that happened. Uh, रुला दोगे तुम, पता है ये अपने ऑडियंस को। uh, सब लौंडे अकेले बैठे. cinephile Londe. Yeah. So anyway, basically, okay, that let's quickly, Let's I move think, on. cover Black Warrant. It's 8:56 over there. It's 4:30 for me. चलो, okay. हाँ, ठीक है, मेरे को निकलना है आधे पर घंटे में, तो okay. मुझे भी So 15-20 मिनट में निकलना है, तो करते हैं okay, फटाक से. you can cover Black Warrant very quickly. I want to just take a couple of chats. Nani Kora said, "How does Aditya stay so humble? I didn't know he had breakfast with Shekhar Kapoor." भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा. फिल्म फेस्टिवल पे सेंसरशिप नहीं होती है, हाँ, नहीं नहीं होती है. ऑल्सो डिस्पैच का, आई थिंक अनु बेल पुट आउट अ ट्वीट that there Yeah, are somehow two cuts of it on Z5. तो go look up Kanu Bell's Twitter or Insta, whatever. सावधान रहें, सतर्क रहें. Watch the right cut डायरेक्टर्स of the कट ही movie. देखना. Yeah. Watch the director's cut. हिमांशु तेरे पास Uh, है C5? अरे ले ले हाँ। भाई, 200 रुपये चल. नहीं, So, वो उसमें आता है जियो से। अगर जियो का सिम होता है ना, तो जब तुम हाँ प्लान खरीदते हो ना, उसमें सोनी लिव और Z5 फ्री में दे देते हैं वो तुम्हें, तुम ले लो भाई। बताओ, जियो सिनेमा नहीं देते फ्री में क्या हाँ, है? जियो सिनेमा फ्री नहीं है, जियो सिनेमा है दिस इज फ्री बट अमेजिंग. प्रीमियम फ्री नहीं है। हाँ, प्रीमियम। Oh, डॉक्टर्स नहीं देख सकते फिर. another interesting thing for everyone listening. The first episode of season 2 of Severance, जो I'm assuming भरत ने अब भी नहीं देखा है, नहीं. is coming out. हिमांशु, I hope कब आ you रही are है, कब आ रही psyched. है? इस फ्राइडे को पहला एपिसोड आ रहा है, तो बढ़िया है। डन. मेरा तो या आई श्योर है. मीन, तो 2 साल बाद आ रहा है भाई, 2 साल एग्जैक्टली बाद। exactly. भरत, प्लीज वॉच इट, यू विल लव इट. आई मतलब शुड वॉच इट नाउ. तू पागल हो जाएगा सच में. इट्स ठीक नहीं, है. सो वेल मेड. पागल नहीं होगा तो नहीं, आई डिसएग्री. अच्छा अच्छी है, ठीक बहुत है अच्छी, भाई. आई लव इट यार, इवन आई लाइक्ड इट। आई मीन पीपल हैव सेड द सेम थिंग अबाउट इंडस्ट्री एंड एचबीओ के, जो भी निकलता है। अब इंडस्ट्री के पीछे मैं पागल नहीं हो पाया, आई थिंक, एंड पीपल कंपेयर्ड इट टू दिस वन आल्सो ना, द सक्सेशन. सक्सेशन। आई डोंट थिंक इट्स लाइक सक्सेशन, तो बी इंडस्ट्री वेरी में अबाउट मेरे दिस। को इंडस्ट्री में मैंने देखी, थोड़ा सा देखा मैंने, और मुझे बहुत बहुत प्रॉमिसिंग लगा फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स. फिर उसके बाद उसमें मुझे कंप्लेन था सेक्स वाला, कि इसमें थोड़ा इट, ज्यादा। बिकॉज इट wasn't अबाउट द दैट सेक्स दिखा रहे, इट वाज जस्ट दैट हर सेकंड सीन, एंड आई वांट टू नो द स्टोरी. मतलब मेरे को वो भी बताओ साथ साथ. एनीवे, सो ब्लैक वॉरेंट, भरत तूने नहीं देखा है, हिमांशु तूने देखा है. तूने 4 एपिसोड देखे, मैंने पूरा देखा है. It is based on a book by Sunil Kumar Gupta. He's a former warden of the Tihar jail, jailer जो भी. Which And Himanshu has read the book. Himanshu has read the book as well. And yeah, so this is a show based on that. In fact, I had met one other, well, it's written by Satyanshu Singh and I think Vikramaditya Motwane, and Vikramaditya Motwane directed. Arkesh Ajay is another director and writer. I met Arkesh at some time back very randomly. So in case he's Oh, watching, shout out. मैं तेरे, remember when I was working with this one filmmaker थोड़ा टाइम पहले, मैं तेरे को बताता हूँ इसके बाद. But हाँ anyway, हाँ. तो over there he was his friend. So Okay.
Anyway, so Black Warrant came out. The lead in this is some Kapoor. He's related. He's Kunal Kapoor's son, uh, Oh, Dehan Kapoor or something. And I thought that the show started off beautifully. I thought Indian TV or like whatever Indian web series is back. Motwane will save us all. I really liked it till a certain point. I think the show has a drop off uh, rate, which might be more for some, less for others. But I think it मेरे लिए significantly dropped in quality in the last few episodes. In fact, right after जहाँ तक हिमांशु ने देखा वहां तक मुझे काफी सही लगा और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ड्रॉप लग रहा है. इट्स अ वेरी आई थिंक it मैंने पहले ही बोल चुका पॉडकास्ट में. फॉर मी अ लॉट ऑफ सिनेमा और जस्ट फिक्शन इज गुड फिक्शन इज अबाउट accurately showing how the world works, how this corner or this part or this aspect of the world works. अगर तुम उतना भी कर दो तो बहुत बड़ी बात होती है. I think that alone is makes a very good viewing. So I think in that it succeeds very well, although I have some complaints on that regard as well, but we'll get to that. Himanshu, what did you think of the show? I thought it's very, very great at the up top, and then it kind of falls off for me. But yeah, what यार do you मैंने think? 4 एपिसोड देखा है. फोर, आई एम Hmm. ऑन द फोर्थ एपिसोड राइट नाउ. एंड थिंग्स आर कमिंग बैक टू मी बिकॉज आई रेड द बुक अ ईयर अगो. Hmm. एंड मुझे 1 साल पहले जब मैंने बुक पढ़ा था, आई हैड स्पोकन अबाउट इट, आई हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन अ लॉट ऑफ इट. तो जब ये शो स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड रिकलेक्टिंग एंड आई रियलाइज दैट दे हैव डन व्हाट किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में हुआ है, which is the book was an investigative journalist Hmm. wala book, like they, it's based on, like it's like a article about what Unraveling. happened, and it's by the person who went through it, right? So Hmm. the book is very different from the show. The show is fictional, and then you can tell kitna fictional hai. Like they started dotting their i's and t's, right? They started saying ki Hmm. because of our main character things are changing, while the book is very open about how that's not the Not the case. case. Oh, the that's not the the case in the book. the book is, the main character is not, he's like a plug in the system who's do his head is down, and he's no, he's not a young guy who's like out to Hmm. change the world. He doesn't have that ambition. Hmm. The book is not like that. The show is like that. The show is, it's been made to, like ऐसे कर रहे हैं, हर कैरेक्टर को थोड़ा मोटिवेशन और दे दिया, थोड़ा उनका Hmm. बैक स्टोरी और कर दिया, जबकि hmm. बुक में, बुक अलग है. बुक आई थिंक बेटर है, ऑफ कोर्स. पढ़ना, Hmm. आई थिंक इट्स वर्थ रीडिंग, बिकॉज देन यू Would you अंडरस्टैंड. recommend reading it before watching? Because then I'll हाँ, read it. या आई वुड पहले पढ़ो फिर देखो इन्होंने क्या किया. तुझे सब Yeah. दिख जाएगा, तुझे ना बहुत ऐसे ऐसे, मतलब वो खुल जाएगा, इनका इनका सारा अकाउंट खुल इनका जाएगा पोल कि खुल यार. जाएगा. So हाँ. you did not like it as much, you're saying? द शो, Yeah. अभी 4 एपिसोड देखे हैं, ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर द बिग, द द पार्ट ऑफ द शो विच आई लाइक, द पार्ट ऑफ द बुक विच आई लाइक्ड हैज नॉट appeared yet. Like I Are you like, talking about the part of the book where he talks about, because it's a real story? Because मैंने वो हटाऊं इंटरव्यू क्या? देखा था in which he talks about, नहीं नहीं, it's a real thing. मैंने बुक नहीं पढ़ी है बट वो इंटरव्यू देखा था मैंने बुक के बारे में, in which he talks about his relationship with Afzal Guru, yeah, um, all that that stuff. and हाँ, Manu Sharma, मनु शर्मा वाला, हाँ करेक्ट. and या then the whole protest, the आप से पहले वाला तो the book, the show, this is not a spoiler, the show ends pretty much only a few years after it starts. So it's हाँ, not going till that. वो 80s में ही है अभी भी. So got it. the तो show is अभी the, the हाँ, ender of the book is, the book takes you till like 2000s. yeah, तो correct. फिर हम लोग Which Are is they what I making also more thought. seasons? Are they making more seasons? Is it भाई ये they तो can, I think they applause can. is making it, so yeah, you Oh, can find out. नहीं बट तूने पूरा देखा देते हैं. मैंने पूरा शो देखा, हाँ. So have they left it on like a कि अच्छा अब सीजन 2 आएगा या ऐसा या कुछ? आएगा, मतलब वो वैसे ही, हाँ. 100% दे हैव अ क्लिफ हैंगर फॉर इट. ओके. बट इट्स लाइक अ नथिंग बर्गर क्लिफ हैंगर इन माई By the ओपिनियन, way, मतलब इट्स, या. just to hook you guys to the book, हम्म. they've portrayed Manu Sharma as a reformed person who या. changed Tihar jail for the good. He did his हम्म. best to, and he actually achieved something which was Nice. unthinkable. He fixed the system in a bit. So the person who killed Jessica Lal, that This is guy, right? what I also stuck out to me from that interview. That's also very, if you don't want to read the book,
देन आप इंटरव्यू भी देख सकते हो, बहुत अच्छा था न्यूज लॉन्ड्री पे विद सुनील गुप्ता एंड द अदर हुज व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट हुज रिटन द बुक. सुनेत्रा Sunetra सुनेत्रा समथिंग Chaudhary, I think. व्हाटएवर. So yeah, so that was a very good interview in which he also talks about that Manu Sharma thing. In fact, अभी मनु शर्मा का कुछ और भी पता चला. हाँ, He's a new wine company and packaged under something else, and then people found out कि अरे he owns it. So पर anyway, उसमें उसका वो हाँ, उसमें मैं मुझे वही लगा कि इफ ही हैज ही सर्व्ड If दिस he सेंटेंस served it, he फुली. then served the sentence. I think it was हाँ, also commuted. I think the sentence was also commuted by the family. तो अब वो दारू बेच रहा है, तो मतलब आई नो हाँ द ठीक है. आयरनी, आई Yeah, गेट इट, that. इट्स सैड एंड इट्स ट्रेजिक, बट हाँ. अभी क्या करोगे, मतलब योर Yeah, you can. जस्टिस I सिस्टम. I also think it's a moot point because it's like या he's been to jail, he's done the thing. Yeah, now what else is या there? तो तुम फिर जस्टिस का क्वेश्चनिंग, वो होल प्रोसेस ऑफ जस्टिस, यू क्वेश्चन एंड ऑल दैट, व्हिच इज फेयर, लाइक यू कैन डू Yeah, दैट इन इंडिया स्पेशली, आई वुड से. बट absolutely. तो मेरा एक बड़ा, हाँ, तो ये another thing that that interview में he talks about that अफजल गुरु का, how he did not think Afzal Guru was guilty as far as I remember. He genuinely thought he was being set up. And because, as you know, the under the Congress government, Afzal Guru was hung overnight, extrajudiciously almost, like overnight, like all the protocols were bypassed. So yeah, so that all that is very interesting. मेरे को ये show में एक problem लगी कि a lot of focus on after a certain point. शुरू वाले episodes are very good, but a lot of focus on a lot of bullshit which does not matter, which I don't care about, especially in the last 3-4 episodes. कि एक लव एंगल डाला हुआ है कहीं पर, एक बहुत ही साइड कैरेक्टर का, क्यों है, क्या है, क्यों करना है, कोई जरूरत नहीं है. बहुत किताब दो में है तीन सब, कैरेक्टर्स का ऐसा है. हाँ. किताब में क्या है हाँ, सब. है बट एक मतलब उतना नहीं था जितना इन्होंने नहीं, ऑलरेडी एक था. 4 एपिसोड में दिखा दिया ना, उतना किताब में उतना है ही नहीं. नहीं, किताब एक में कि था दे जो फेल इन है. लव एंड दे गॉट टुगेदर, बस खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. वन ऑफ देम वाज फाइन, द वन ऑफ द जेलर्स जो भी है, वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट जो वो एक ठीक है, चलो ठीक है, बट उसके अलावा जो था ऊपर से, एक चीज है, दे कीप हिंटिंग एट द फैक्ट दैट एक कास्ट सिस्टम चलता है जेलों में, कि देर इज एंड इन फैक्ट दैट लॉ वाज रिसेंटली रिपील्ड. डिड यू गाइस नो दिस? Legally in Indian IPC में, legally there was a caste system imposed, a legal caste system in jails, व्हाट. similar to the 13th Amendment in the US, जहाँ पे you can technically ओके. be a slave in America if you are incarcerated. So in India, it was very recently repealed, that law, which basically said that if you belong to certain castes, you do work, you live in certain हाँ, quarters, you work for those the people who are करेक्ट. not from those castes. So it was pretty fucked up. I thought the show does not spend enough time going. Matlab, it gives hints of that, and because I knew about the case and all those things, तो मुझे वो थोड़ा सा समझ में आया. But I feel like for a casual viewer, you should have explained that a little more and gone into the more intricate details of how that works. I thought that was a little missing, frankly. But yeah, आई हैड अ क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि ये मेरा hmm, फर्स्ट थॉट था आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर. मुझे ट्रेलर उतना खास नहीं लगा था, एंड आई थिंक आदित्य same. यू आल्सो हैड द सेम ओपिनियन. Yeah. मेरा उसमें ये था, मेरा मिसगिविंग था ये. आई मीन, गोइंग बाय हाउ ऑल सेल्फ सेंसर्ड वी हैव बिकम एज एन इंडस्ट्री. एक सवाल तो हिमांशु से मुझे है कि क्या किताब डज डज द इज द किताब बुक पॉलिटिकल, डज इट मेक, डज इट स्पीक ट्रूथ टू पावर इन दैट सेंस, कि इज इट एंटी एस्टैब्लिशमेंट इन एनी वे? A, that. B, if yes, then is the show speaking truth to power? Is it kind of showing police brutality for what it is and not glamorizing it and not kind of, yeah. बुक इतना पॉलिटिकल नहीं है, सर्टन चैप्टर्स आर, सो द थिंग इज द वे द बुक का स्ट्रक्चर इज कि अलग अलग चैप्टर अलग अलग ब्लैक वारंट के बारे में है. एक ब्लैक वारंट अच्छा. तब निकलता है जब तुम यू व्हेन यू गेट व्हेन इट्स अ डेथ सेंटेंस, राइट? Hmm. So there are like 12-13 chapters if I'm remembering correctly, and each chapter is about one hanging अबाउट Hmm. ऑफ वन इंडिविजुअल, एंड उस बंदे के केस के ऊपर ज़्यादा है. अब उसमें एक केस में थोड़ा कास्ट सिस्टम, एक केस में पेट्रियार्की, एक केस में कुछ ना कुछ लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम वाइसेस कम आउट. तो एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी रफ ब्रेक डाउन. ऐसा नहीं है कि दे ट्राई Hmm. टू पुट इन लाइक दैट. अफजल गुरु का केस में पॉलिटिक्स आता है थोड़ा बहुत. तो फिर Hmm. आई तू पढ़ेगा तो तेरे को समझ में आएगा. क्योंकि I would never imagine a Netflix to kind of do that kind of a thing.
नहीं, or to इसमें take पता है that इन kind लोग of ने stand. काउंटर बैलेंस इतना, मेरे को सबसे अनोइंग चीज लगी है हर चीज इस शो में टिल दैट पॉइंट, एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट कम्स, आई थिंक वो पॉइंट हिमांशु के लिए आ चुका है, विच इज हर चीज इज वेरी नुआंस्ड, यू नो। जैसे बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, जैसे द मेन कैरेक्टर, आई थॉट हिज परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, आई थॉट इज अ wonderful actor. He's playing a middle class, whatever, banya guy from Delhi, and uski jo आवाज hai, he's like a weakling. So that's how they've played into the show. Like he's not a typical jailer, as opposed to his Haryanvi counterpart, who's like extremely brash. और एक सरदार भी है उसमें, who's, I think somebody in the chat also mentioned, not a very good actor. I thought his performance was very lackluster. Anyway, but Rahul Bhatt is good though. राहुल भट्ट इज वेरी गुड। बट मेरे को एक चीज बहुत अनोइंग लगी कि उसमें, एक उन्होंने काउंटर बैलेंस किया एस्टेब्लिशमेंट वाले चीज का, कि दे गॉट द एट सम पॉइंट जेएनयू से लोग, जेएनयू नाम भी लिया, आई डोंट नो हाउ विवेक अग्निहोत्री कांट टेक द नेम एंड दिस कैन, जेएनयू से स्टूडेंट्स आते हैं अरेस्ट होके, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर अरेस्टेड एंड पुट इनटू जेल, एंड दे आर ट्रीटेड विद द मोस्ट क्लीशे वे दैट यू वुड, मतलब इट डजंट सिट वेल इन दैट शो। जिस शो में तुम एक रियल स्टोरीज बोल रहे हो, उसमें ऐसे दिखाया है, दी स्टूडेंट्स आर इंग्लिश स्पीकर्स एंड दे डोंट नो हाउ टू डील, एंड they are ignorant and they don't know shit, and I'm like, ha, sure, some of them, but a lot of them would not be that way. Also, this is the 80s, they're not that far out of touch. अभी जो out of touch है वो बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया, बट उस टाइम पे भाई, we have seen photos of fucking Sitaram Yechuri, standing Yeah. next to Indira Gandhi and saying whatever without any fear. I Also, think, JNU still is a very non-elitist space, yeah, that's right? what, it's a public university. It's a public So university. सो बहुत ही स्टूपिड तरीके से वो दिखाया, एंड आई थिंक दिस वाज, मैं जो पहले कह रहा था वाइस सिग्नलिंग, इट वाज अ वे टू डू वाइस सिग्नलिंग बाय Hmm. सेइंग कि ओ, यू नो चलो वी आर लिबरल, वी आर राइट विंग, जो भी है, बट स्टूडेंट्स तो चूतिए ही होते हैं bro। नहीं भाई, हमेशा नहीं होते शायद, तुम लोग ज्यादा चूती हो शायद, है ना जब। एनीवे, सो लाइक द कॉप्स का ऑल्सो, द बीटिंग्स दैट दे डू इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड बाय द एंड, Really? बट एज शुरू में इट्स लाइक ओ फक, सो फक्ड अप, उसके बाद आते आते इट इज ट्रीटेड एज कि ओ दिस कैरेक्टर इज ओनली अ लिटिल टू नाइव, एक्चुअली तो चल ठीक है, a lot of things are excused away. I want to get to it once you watch the show, because I found that Hmm. to be disgusting. I don't know why they're so scared to demonize their own characters. They stop one step short. They show them doing horrible things, but they get them back into the fold very quickly. यार And बुक भी some वैसा of, है यार. बुक, yeah. the reason the book is popular is because you're reading people do crazy shit and not care about it. मतलब Hmm. तू नहीं पिट रहा ना हर दिन भरत, मतलब Hmm. I'm just telling. तो उस बुक में अगर लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और मर्डर हो रहा है, नॉर्मल हैंगिंग्स हो रही है, और अगर वो कंबल बंदा नहीं दी जा एक, रहे हैं, हाँ। हाँ, लाइक दे आर, एंड उस बुक में ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट वेरी इजीली, वेरी ओपनली. तो द बुक इज ओनली लाइक दैट. सो द शो, द आई थिंक द थिंग ट्रांसेंड्स इनटू द शो, बट Hmm. द शो नीड्स टू हैव सम थिंग ऑफ इट्स ओन. आई Yeah. गेस दैट्स व्हाट आदित्य सिंह, जो कि नहीं है. आई गेट इट. इट्स नॉट, इट्स लाइक imagine fictionalizing a, like it's killers of the flower moon, but without uh, Saying कि these guys are assholes. हाँ, it's Yeah. like that. Oh, damn. Okay. मतलब it does say they're assholes. Okay, just so that they नहीं, can बट उनका लव injure. स्टोरी भी आ रहा है ना, लाइक उनका उनका हाँ, एक अपना फैमिली का, अरे उनका प्रॉब्लम भी तो है. yeah, like for example, like for context, this character, जो अपना अगली वाला कौन है, जो वेरी गुड एक्टर, राहुल भट्ट. राहुल भट्ट। Hmm. राहुल भट्ट का कैरेक्टर इज शोन डूइंग, आई एम नॉट गोना स्पॉइल, बट इज शोन डूइंग एज अ जेलर some very atrocious things. Okay, and after that, in a way, almost to somehow justify it, it's like कि उसकी पर फैमिली भी है, वो अपनी फैम वो ही इज हैविंग अ वेरी ट्रबल्ड फैमिली लाइफ। आई एम लाइक गुड, in fact I was like उसको he faces some repercussion at some point, I'm like, yeah, shoot him in the face also, like I'm like, because उसको ऐसी चीजें कराते हुए दिखाया, I'm like, भाई, I don't really give a shit after a point that what happens to this character. So I feel like it stops one step short of really criticizing the system. बट Hmm. तेरे को लगता है आदित्य की क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है इतना, लाइक बुक में भी अगर क्रिटिसिज्म नहीं है ऑफ द आई थिंक सिस्टम. बुक, क्योंकि वो देख, बुक जो लिखी है वो एक एक्स जेलर ने लिखी है। आई कमेंड हिम फॉर सेइंग थिंग्स ऑनेस्टली, बट ऑब्वियसली उसकी भी अपनी एक साइकोलॉजी है, वो भी वो चीज़ों से नॉर्मलाइज करके निकला है। अगर तुम एक शो बना रहे हो, तुम फिक्शन बना रहे हो, तो तुमको अपना भी, तुम भी तो एक इंसान हो ना जिसने जिए अपनी पर्सपेक्टिव से जिंदगी, तो तुम भी अपना कुछ डालो उसमें माल।
वो होता है ना, यू गिव एन ओपिनियन, इट इज अ सीरियस टॉपिक यू मेकिंग इट ऑन, मतलब कोई हलवाई की दुकान वाला शो तो है नहीं, है ना, जेल पर है, हाँ, तो गिव योर ओपिनियन, व्हाई स्टॉप शॉर्ट। ऑल्सो but I'll tell you one चार्ल्स thing. सोबराज, चार्ल्स सोबराज का कैरेक्टर इसमें विच इज वेरी फन इन द बिगिनिंग, बट वो आते थोड़ा टाइम होते होते ना, वो इट्स दे ट्राई टू डू अ माइंड हंटर काइंड ऑफ थिंग इन द बिगिनिंग, बट वो आते आते इट बिकम्स वेरी, I'm like, why I don't, matlab, he's still a fucking like serial killer, right? Like I don't love the guy, and the show kind of tries to make you think like, oh, cutie, you know, like although the actor is very good, I really like that actor. वो झोगली हाँ, में He's भी a, था। he was Jawaharlal Nehru also. या मैंने वो नहीं देखी Hmm. अब तक, फ्रीडम एट मिडनाइट। देखनी चाहिए ना. I have not seen it. I've read the book. I need to see what the fuck they've done with that book. हम्म। अच्छा वी अच्छा दैट दोज आर चलो. आवर व्यूज ऑन ब्लैक वॉरेंट, आई थिंक वी शुड एंड, बट भरत तेरे लिए एक सवाल है। मॉन Okay. मीटा हैज रिटन, भरत हैव यू फिनिश रीडिंग मैंने मांडू नहीं देखा, इफ यस कुड यू प्लीज टॉक अबाउट इट, थैंक्स। Yeah, I've not finished it. It's a very heavy read, यार. It's कितनी बढ़िया। मतलब नहीं, it's not about the length of the book. Length मतलब 400 पेज की किताब है. ओके। पर बहुत बहुत heavy read है यार वो. मतलब it's basically about a guy chronicling his madness, like literal madness. And he, by by nature of it, the book is cyclical. It is हम्म। about going in and out of hallucinations, about ramblings, about all of that. And it's structured very much like that. It's like the entire book has no like like it exists in multiple time spaces at once. So तुम पढ़ रहे हो and suddenly it will go into some other time space. Suddenly he'll say future. No हम्म। heading, nothing. Just future लिख दिया. And now we're in the future. Which future, where future, we don't know. Then we go into some time back. And some time back, पता नहीं, 7 साल पहले डू यू types. थिंक डू यू थिंक बुक्स लाइक दीज आर, मतलब या तो तुम एक ही बार में पढ़ लो वरना इट बिकम्स वेरी हार्ड, It बिकॉज does. It does. या। But I also kind of don't want to gobble it. मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं फटाक से डाटा पढ़ लूं. For me, it's हम्म। more like every day I open a page, I read 2-3 pages and I go to sleep. So हम्म। आज मुझे उसकी लाइफ का ये पता चला. And very much like, I mean, that's why how I could also identify Yograj Singh's mental ye, because if you guys notice, हम्म। Yograj Singh suddenly becomes funny. Like suddenly he'll joke. Coherent. Yeah, suddenly coherent. And that's the exact thing that's described in the book. The writer is self-aware that he's doing हम्म। this, that he's going in and out of coherence. But because he's also suffering, he will do it unknowingly also. तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है. आई थिंक, आई डोंट थिंक आई हैव रेड सच अ गुड बुक एवर. तो प्लीज पढ़ो. मैं तो इनफैक्ट आदित्य, इफ यू वर हियर, आई वुड हैव गिवन दिस कॉपी टू यू टू रीड जस्ट. अरे although I have done some, मैंने रियलाइज किया बाद में that I have packed your रे ब्रैडबरी, नहीं, रेमंड कावर वाली जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ओ तूने दी नाइस थी, नाइस. वो पढ़ मैं लेना. ले आया हूँ, तो मैं वापस and I remember recommending it earlier also, but I read a couple of, अभी I'm at the last 3 stories maybe left। नहीं, मैंने एक एक स्टोरी तो उसमें इज लाइक, तूने पढ़ी है वो बाय द वे भरत? पूरी नहीं करी यार. 4-5 बट पढ़ी है उसमें उसकी. आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट 1 or 2 stories because they are some of the like, एक तो मतलब गोइंग लाइक क्यूट स्टोरी एंड देन जस्ट अ बॉम्ब ड्रॉप्स, मतलब इट्स like that। By the way, we were talking about which book? Bharat was talking about मैंने मांडू नहीं देखा, and I was talking about what we talk about when we talk about Love by Raymond Carver। तो Mon Mita मैंने already मांडू, knows, yes। हाँ, Yeah। मैंने मांडू नहीं देखा का इंग्लिश ट्रांसलेशन आई एम रीडिंग विच इज बाय जेरी हम्म। पिंटो, इवन दो आई वांट टू रीड द हिंदी वन आफ्टर दिस. बिकॉज ओह भाई, तू बिकॉज तू बोल रहा नहीं है मैं, उसमें भारी है हाँ, तो। बट हाँ। लेकिन क्या है कि द राइटिंग इट सेल्फ इज वेरी सिंपल. हम्म। क्योंकि मैंने स्वदेश दीपक जो राइटर है उनकी हम्म। हिंदी में पढ़ी है 2 किताबें. ओके। सो हिज राइटिंग इज वेरी वेरी लाइक जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे ही लिखा है हम्म। उसमें. एंड व्हाट जेरी पिंटो हैज डन इज ही इज बीन सो नाइस अबाउट इट. The writer, original writer, I mean Swadesh Deepak, has written a lot of things in English also. हम्म। So he's transcoded, I mean he's italicized them. So you can tell कि ये हिंदी में लिखा है ओरिजिनल में और ये अब सडनली हम्म। इंग्लिश में लिख दिया है. So it's very very interesting. It's a, and it has all of your हिंदी लिटरेचर के, अगर आप हल्के से भी वो ना, if you follow like निर्मल हम्म। वर्मा फॉर एग्जाम्पल, आपको नाम पता होगा कि या। कौन है. So it has one whole chapter is called An Evening with Nirmal Verma. And Nirmal Verma and him are talking. It's very interesting. It's हम्म। like
my kind of book. By the way, Monvita has also said, Bharat, do read his son's essays in the Book of Light, edited by Jerry Pinto. Oh, interesting. Yeah, I'll do that. nice. I'll do Nani Kaur has asked a very weird सवाल. Do you guys enjoy masala films? ये कैसा सवाल है that. भाई? नहीं. चलो. I do. तो रेको, आई गेस रेको कोई है अपनी? तेरी कोई रेको है भरत, हिमांशु? यार अभी हाँ नहीं है, बट हाँ, इतना सारा तुम्हारी तो है तो नहीं। तुम्हें बताओ। I have a weird reco which I want to give. बोलो। एक तो मैंने वो फिल्म recommend की थी, which was The City of Lost Children by Jean-Pierre Jeunet. Dispatch by Kanu Bell, for sure. I would हम्म recommend highly. And one YouTube, because I'm now not in India, and like every good you know, Indian man, I've also really gotten into cooking. I've cooked very little in India, so I've had to cook a lot here, and I'm really enjoying that process. And I'm exploring a lot of cooking based content now. So one of the funniest channels I came across is Future Kanu. मतलब वो ऐसा, उसका लिटरली वो ऐसा अपना, उसका प्रोफाइल है, इज नेवर रिवील्ड हिज फेस, ओके, हम्म like this. And then he goes to like different recipes that people have made, मतलब other videos, other जो proper हम्म professional chefs हैं, उनके videos देखता है, like most viewed chicken biryani recipe. तो वो हम्म, फिर वो खुद बनाने की कोशिश करेगा badly, not badly, हाँ he'll try to make it properly, but he doesn't bother to get the right ingredients. तो लाइक अगर हम्म गार्लिक नहीं है तो फिर वो कुछ और डाल देगा, वो ऑलिव ऑयल नहीं है तो वो कुछ और तेल डाल डाल देगा उसमें. So he just does it, and it's a very fun way to watch. So yeah. बाकी नाइस। अफगानी ऑमलेट बनाया करो, बहुत मैं वही खा रहा हूँ आजकल. बहुत मजा आता है बनाने में. और मेरा कोई एक रेको? रिकमेंडेशन आ गया हाँ, मेरा, क्योंकि बताओ. सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट कनी कुसरुती, राइट? सो द यस. वन शॉर्ट फिल्म दैट आई वॉच्ड ऑफ हर, व्हिच काइंड ऑफ, बहुत पहले, मतलब ये आई हम्म. थिंक 10 years back, and it's on YouTube. It's a single short film called Memories of a Machine, and she's the only character in that film. ओके. Please watch it. I don't want to say anything about it because 11-12 minute की film है, हम्म. and it's very very cool. कहाँ पे है? Memories of a Machine. It's on YouTube. ठीक है, हम्म. It's a देखूँ। Mallu film with English subtitles, so you can easily watch it. Darshit has asked, sorry in advance, but if you guys are okay with it, can I share the link to my short film in the comment section? Yeah, absolutely, Darshit, you can. Uh, Please, Darshit is one of a very big member of our WhatsApp discontent community. He's a member of the channel, and thank you so much, Darshit. This is the least we can do. या And yeah, Mm. so please check. He's a student right now, and he's made a short film, and I believe he's making a few more. Please go Yeah. check out his short film and support his work. And while you're out there uh, supporting short films, please also support this short film called A Happy Couple, which is a short film by Discontent. I've written and directed it and edited it. Bharat's been the executive producer. Himanshu's also been our loving figure who's consulted with me over late night editing sessions and has been very helpful. So please go follow the Insta page of the film. It's called A Happy Couple, and Discontent Insta भी follow कर ही लो, I think. So Yeah. I'm trying to do a festival run of the film. It's kind of hard because what we're also learning as we do this, and I've spoken to other short filmmakers also who made you know, poor people, hungry people in India film. अगर आप वो नहीं करते हो तो थोड़ा मुश्किल है. Although I'm not saying that is the reason, but whatever. Mm. So that is one reason maybe. So yeah, will we be discussing the conclave? What is the conclave? It's a film. हाँ, हाँ, it's a इज film दैट with पोप वन the ना? Pope movie. Yeah, देखनी चाहिए. Actually, it's getting a good amount of reviews, I and think yeah, this has been a good episode in terms of clearing backlog because we had not spoken about All We yeah. Imagine Is Light, Girls Will Be Girls, Black Warrant भी काफी हमने वो किया. So yeah, I think cool stuff. Yep. We'll be back next week, committed to that. We'll try to do the हाँ, Kanubel एक का. जापानीज फिल्म फेस्टिवल जो निकली है उसमें एक दो फिल्म अगर तुम लोग भी देखते हो मैं भी देखता Oh हूँ, हाँ. हम्म. बात कर सकते हैं थोड़ा। कब है यार? कौन हो सी? गया क्या? 17th 18th 19th विच इज फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हर दिन Oh दो दो shit. फिल्में Yeah. निकल रही है। तो कहाँ पर निकल संडे रही है? हर मतलब जगह है. पीवीआर पे। पक. हाँ, बट अच्छी फिल्म बर्लिन है में नहीं है. बर्लिन में नहीं. बर्लिन में पीवीआर नहीं होगा ना? बर्लिन में प्रिया वीडियो whatever, जो वो कुछ नहीं. और विलेज ब्रांड रोड शो. होगा। विलेज रोड शो, हाँ, वो नहीं. बट देर इज भाई यहाँ पर देर इज अ काउरस मागी फेस्टिवल गोइंग ऑन.
पर फिर मेरे को ऐसा है कि वही है भाई, 10-10 यूरो दे के मेरे को नहीं देखते। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ ऑल्सो भाई बर्लिन या टॉरिस माकी का ही फ्रेम लगता है हर जगह से, ऐसा मुझे वही लगता एग्जैक्ट काइंड ऑफ या है। बट या सो anyway, चलो, that was a good episode. Thank you guys for joining थैंक यू us. एवरीवन, Thank you गुड for नाइट, watching. Please drop a like before you leave, and yeah, good night. Bye bye. Good बाय। night.